वलौ बसतल्लाहु अर्रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्ज़ि वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरिन मा यशा इन्नहु बिइबादिही ख़बीरुन बसीर वहुवल्लज़ी युनज़्ज़िलुल गैस मिन बादि मा क़नतु वयंशुरु रहमतह वहुवल वलियुल हमीद वमिन आयातिही खल्क़ुस समावाति वल अर्ज़ वमा बस्स फ़ीहिमा मिन दाब्बह वहुव अला जमइहिम इज़ा यशाअ क़दीर वमा अस्वाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयअफ़ू अन कसीर वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन फ़िल अर्ज़ वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर वमिन आयातिहिल जवारि फ़िल बहरि कलअअलाम इन यशा युस्किनिर रीह वयज़लल्न रवाकिद अला ज़ुहरिह इन्न फ़ी ज़ालिक लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर औ युबिक़हुन्न बिमा कसबू वयअफ़ू अन कसीर वयअलमल्लज़ीन युजादिलून फ़ी आयातिना मा लहुम मिन महीस वमा ऊतीतुम मिन शैइन फमताउल हयातिद दुनिया वमा इंदल्लाहि खैरुन व अब्क़ल आमनु व अला रब्बिहिम यतवक्कलून वल्लज़ीन यज्तनिबून कबाइरल इस्मि वल फ़वाहिश व इज़ा मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून वल्लज़ीन इज्तजाबू लिरब्बिहिम व अक़ामुस्सलात व अम्रुहुम शूरा बैनहुम व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। शुक्र अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। और अगर खुदा तमाम बंदों के लिए रिज़्क़ को वसी कर देता तो ये लोग ज़मीन में बगावत कर देते, मगर वो अपनी मशीयत के मुताबिक मुअय्यना मिक़दार में नाजिल करता है कि वो अपने बंदों से खूब बाखबर है और उनके हालात का देखने वाला है। वही वो है जो इनके मायूस हो जाने के बाद बारिश को नाजिल करता है और अपनी रहमत को मुंतशिर कर देता है, और वही काबिल तारीफ़ मालिक और सरपरस्त है। और उसकी निशानियों में से ज़मीन और आसमान की खिलकत और उनके अंदर चलने वाले तमाम जानदार हैं, और वो जब चाहे इन सब को जमा कर लेने पर कुदरत रखने वाला है। और तुम तक जो मुसीबत भी पहुंचती है वो तुम्हारे हाथों की कमाई है, और वो बहुत सी बातों को मुआफ़ भी कर देता है। और तुम ज़मीन में खुदा को आजिज़ नहीं कर सकते, और तुम्हारे लिए इसके अलावा कोई सरपरस्त और मददगार भी नहीं है। और इसकी निशानियों में से समंदर में चलने वाले बादबानी जहाज़ भी हैं जो पहाड़ की तरह बुलंद हैं। वो अगर चाहे तो हवा को साकिन बना दे और सब सतह आब पर जम कर रह जाएं। बेशक इस हकीकत में सब्र शुक्र करने वालों के लिए बहुत सी निशानियां पाई जाती हैं। या वो उन्हें इनके आमाल की बिना पर हलाक ही कर दे, और वो बहुत सी बातों को मुआफ़ कर देता है। और हमारी आयतों में झगड़ा करने वालों के लिए को मालूम हो जाना चाहिए कि उनके लिए छुटकारा नहीं है। बस तुमको जो कुछ भी दिया गया है वो ज़िंदगानी दुनिया का चैन है और बस। और जो कुछ अल्लाह की बारगाह में है वो खैर और बाकी रहने वाला है उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं और अपने परवरदिगार पर भरोसा करते हैं, और बड़े बड़े गुनाहों और फहश बातों से परहेज़ करते हैं,
और जब गुस्सा आ जाता है तो मुआफ़ कर देते हैं। और जो अपने रब की बात को कबूल करते हैं और नमाज कायम करते हैं और आपस के मामलात में मशवरा करते हैं और हमारे रिस्क में से हमारी राह में ख़र्च करते हैं। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली। जज़ाकल्लाह अली भाई। ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम ज़ैन अली है and I will be your host for today's session. On behalf of Khoja Jamaat, I welcome you all to this session with the name Entrepreneurship and Innovation. अभी यहाँ जिन आयत की तिलावत की गई वो सूरह शूरा की आयत नंबर 27 से लेके 28 से लेके 37वीं आयत हैं। इन आयत में कुरान का मौजू जो है वो ये कि हुसूल रिस्क यानी किस तरीके से अपने रिस्क को हासिल करना और उसे किन जगहों पे खर्च करना या इन्वेस्ट करना है। आज के सेशन का मकसद भी एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि हुसूल रिस्क, अपने रिस्क को किस तरीके से बढ़ाया जाए या अपने कारोबार को किस तरीके से वसअत दी जाए या उसे किस तरीके से फ़रोग़ दिया जाए। इस सेशन की अहमियत को मज़ीद डिस्कस करने के लिए मैं दावत देना चाहूँगा मैनेजमेंट कमेटी मेंबर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ IT रिलेटेड मैटर्स जनाब मेहदी हरानी साहब को कि वो आएँ और हम सबसे शेयर करें कि आज इस सेशन का मकसद और आज हमारे की टेक अवेज़ क्या हो सकते हैं। थैंक यू। A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. On behalf of Khoja PSIAJ National Jamaat, President साहब, अस्कर हमारे ट्रेजरर और IT सब कमेटी के ऑफिस बेयर, उन सब की जानिब से आपको वेलकम करता हूँ। ये इस सिलसिले का तीसरा सेशन है। पहला सेशन जो फाइनेंस के ऊपर हुआ था, फाइनेंस ऑफ द फ्यूचर के ऊपर। सेकंड हमारा टैक्स इम्पैक्ट के ऊपर कि आफ्टर टैक्स एक आम इंसान पर हमारी कम्युनिटी पे एज अ कॉर्पोरेट एज अ ह्यूमन बीइंग हम पे क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, और जो सवाल हमारे दिमाग में थे या जहनों में थे उनको कोशिश की गई कि उसको सॉल्व किया जाए। और आज इस सिलसिले की तीसरी कड़ी जिसका पर्पस इनोवेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप, और पर्पस इज़ अगेन कि वो तमाम सवालात या वो तमाम चीज़ें जो हमारे यूथ के जहनों में आती हैं रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप या इनोवेशन या स्टार्टअप के हवाले से, तो हम अपने डिस्टिंग्विश गेस्ट के ज़रिए उन सवालात को हल करने की कोशिश करें। यकीनन यहाँ पर एक जो गुफ्तगू होगी उसमें एक मॉडरेटर भी होंगे, साथ में हमारे डिस्टिंग्विश पैनलिस्ट भी हैं। लेकिन असल पर्पज़ ये है कि इनकी बातों को सुनने के बाद अगर आपके जहन में अभी भी कोई सवालात रहते हैं तो आपके पास भी ऑप्शन होगा कि यू कैन ऑल्सो आस्क योर रेलिवेंट क्वेश्चंस टू द डिस्टिंग्विश पैनलिस्ट। और यकीनन आज का जो उन्वान है ये इतना उभरता हुआ उन्वान है कि जो कि अभी देखा जाए तो पाकिस्तान में शायद ये लफ्ज़ या ये जर्नी है वो थोड़ी सी लेट है, बट अगेन नॉट दैट मच लेट के हम ये बोलें कि हम कोई परेशान कौन हालात में आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सीइंग सम गुड न्यूज़ इन द इंडस्ट्री। अगेन बैड न्यूज़ ज़्यादा एयर होती हैं, इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे कि क्या एग्जैक्टली वजूहात हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, बट द गुड पार्ट इज़ वी आर ऑन द राइट ट्रैक। हम अगर जितनी भी डिफरेंट हम देखते हैं रिपोर्ट्स देखते हैं पाकिस्तान के हवाले से, जो स्टार्टअप इंडस्ट्री के हवाले से, आई थिंक दे आर गिविंग सम गुड न्यूज़, गुड लाइट टुवर्ड्स आवर इंडस्ट्री कि हमारी किस तरह इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। तो इंशाल्लाह वील टॉक अबाउट इट विद आवर पैनलिस्ट एंड एज वेल एज मॉडरेटर। इसके अलावा हमारे पास एक खुशनसीबी हमारे कि हमारे पास ऐसे कम्युनिटी के ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि कराची में या पाकिस्तान में बल्कि बाहर जाके भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना नाम रोशन करते हैं, और ना सिर्फ अपना बल्कि कम्युनिटी का नाम रोशन करते हैं। तो आज हमारे पास ऐसी भी एक स्टूडेंट या एक हमारी कम्युनिटी मेंबर मौजूद हैं जो अपनी जर्नी बताएंगी, अपने बारे में बताएंगी कि हाउ शी केम अप विद दिस जर्नी, हाउ व्हाट द चैलेंजेस शी हैज़ फेस्ड, और इंशाल्लाह उनकी जर्नी से हमें क्या सबक मिलता है और हम क्या हमारी यूथ को क्या बेनिफिट मिलेगा। From this part, I'll end up and again welcome you all from on behalf of whole Khoja Jamaat management. Inshallah, we look forward to learn from our distinguished panelist and our presenter. Thank you. मार्च 2022 में एक इंटरनेशनल मीडिया हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद स्टार्टअप्स, उनके हवाले से एक रिपोर्ट पब्लिश की गई उस मीडिया हाउस के, जिसके मुताबिक एक अंदाजे के मुताबिक कि पाकिस्तान में मौजूद स्टार्टअप सेक्टर जनवरी 2021 से अब तक तकरीबन 446 यानी $486 मिलियन ग्लोबल कैपिटल रेस कर चुका है। और उसी रिपोर्ट के एनालिसिस के मुताबिक इसी मौजूदा ट्रेंड को कंसिडर करते हुए 2030 यानी आज से तकरीबन 7 या 8 साल बाद
पाकिस्तान में स्टार्टअप्स की यानी स्टार्टअप सेक्टर की वर्थ लगभग $50 बिलियन तक पहुंच सकती है. I'm sure I'm not the only one who is excited to hear from these esteemed panelists here, and without any further delay, क्योंकि हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे कम्युनिटी में ही ऐसी अचीवर्स मौजूद हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप में अपना नाम बनाने में कामयाब रहे हैं. एंड आई एम वेरी मच थैंक यू टू ऑल फॉर टेकिंग आउट टाइम फ्रॉम योर वैल्यूबल स्केड्यूल्स. सो बगैर किसी ताख़ीर के मैं दावत दूंगा आज के हमारे पैनल डिस्कशंस के मॉडरेटर मिस्टर मीसम रज़ा हिमानी को. वुड लाइक टू एवरीवन टू गिव a huge round of applause for him as well. Mesum is the founder of Karachi.ai, largest community for applied AI practitioner in our city with around 4,000 professionals, students and academic researchers. He is also associated with the NPP Funds Management Limited, one of the leading asset management companies of Pakistan, as a vice president of business intelligence. Apart from his career, Mesum has also completed his ACCA along with BSc honors in applied accounting from Oxford Brookes University. Thank you, Mesum, for taking our time. Introducing our first panelist, Mr. Ali. Mr. Ali Ladhubhai would like to please come up on stage. Mr. Ali is a Chief Operating Officer of Abhi Private Limited. Abhi, a Karachi-based Fintech startup that provides employees salary advances based on their accrued wages. Prior to his current role, he has also led other startups like ForyPay and Karlo Compare. Previously, he has been also associated with various banks like HSBC and Samba Bank. Mr. Ali has done his master's in banking and financial support services from Cardiff University. Thank you very much, sir, for taking our time. Our second panelist, Ms. Shamim Rajani. I'm sure Ms. Shamim is a renowned name in the female members of our community, founder of Code Girls with an objective of empowering women and enable them to enter the tech sector. She is also serving as a Chief Operating Officer and Head of Sales at Gen Tech Solutions, an award-winning software company with over 15 years of top-notch services. She is also associated with the Pakistan Software House Association, commonly known as PASHA, as a chairperson of Skills Committee. Thank you very much, ma'am. Our third and final panelist, Mr. Sibtain Jivani. Mr. Sibtain is a Chief Executive Officer of Smart Benefits, which was founded with the aim to empower businesses, startups, and SMEs in Pakistan to get access to affordable healthcare and life care benefits without any hassle. Previously, he has been associated with TPS Worldwide in his managerial roles in sales and business development areas. He had completed his bachelor's degree in Business Information Technology from the Manchester Metropolitan University, UK. Thank you very much, sir. मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इफ़ आप लोगों के कोई सवालात हों इस पैनल डिस्कशन के बाद या कोई वैल्यूएबल रिमार्क्स हो, सो प्लीज़ काइंडली आप वो नोट करके रखिएगा बिकॉज वी विल ट्राई टू हैव अ ब्रीफ Q&A सेशन आफ्टर दिस पैनल डिस्कशंस एज वेल. Mesum, over to you. थैंक यू. आई थिंक वैसे तो मैं कॉन्फ्रेंसेस में और बिजनेस मीटर्स में सारी इन शख्सियात से मिल चुका हूँ, बट आई थिंक आज मेरे ऊपर पर्सनली थोड़ा सा एक बर्डन है क्योंकि बिकॉज नीड टू डिलीवर और जितनी उम्मीदों से आप सब आएँ तो मेरे लिए आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है कि मैं कोशिश कर सकूँ कि इनके एक्सपीरियंस को आपके सामने पेश कर सकूँ. सो आई थिंक अगर अली का आपने इंट्रोडक्शन सुना हो तो अली स्टार्टेड, आपका मैंने लिंक्डइन भी देखा था, तो आपने एज अ बैंकर स्टार्ट किया था और फिर ऑब्वियसली आपका आपने एक लीप ऑफ फेथ लिया और फिर उसके बाद फिर आप सीरियल एंटरप्रेन्योर बन गया. मैं खुद भी आपको देखते हुए आ रहा हूँ. यू कीप डूइंग दिस थिंग्स डाई एंड यू अगेन लाइफ. ऑलराइट, सो पहला सवाल ये है कि आज का जो मीटअप का जो मेन मकसद है, अगर मैं इस थीम की बात करूँ तो इस वक्त हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं. सो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और एक नॉर्मल सैलरी रूटीन है, आराम से चल रहा है आपको. आजकल तो बेनिफिट्स भी हमारे अपग्रेड हो गए हैं. पहले वो बैंक्स में होता था कि एक बेनिफिट मिलते थे, बाकी किसी इंडस्ट्री में कुछ नहीं मिलता था सैलरी के अलावा. लेकिन अब क्या है, नॉर्मलाइज हो गया. अब तो कंपनीज़ भी निकाल रही हैं कि हम भी कार पॉलिसी देते हैं. तो इतनी आसान लाइफ को छोड़ के एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना, और ख़ास तौर पे शायद लोगों का ये भी रुझान होगा कि शायद एंटरप्रेन्योरशिप बिज़नेस करना है
तो क्या बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में भी फ़र्क है या क्या है, तो आप प्लीज़। अच्छा, थैंक यू। सो सबसे पहले तो आई एम नॉट अवर्स टू डूइंग अ जॉब। आई थिंक फॉर एनीबडी लुकिंग टू गेट इनटू देयर करियर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी काम करें वो दिलो जान से करें एंड ट्राई एंड एक्सेल एट इट विच एवर फील्ड, प्रोफेशन और बिजनेस दैट यू लुक टू गेट इनटू। सबसे पहले तो आई थिंक द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सो आई थिंक मैं एंटरप्रेन्योरशिप को देखता हूँ इस तरह से कि एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम इन द इंडस्ट्री या मार्केट को आप किस तरह से सॉल्व करें जो कोई नॉर्मल बिजनेस सॉल्व नहीं कर रहा है। दैट्स हाउ आई सॉर्ट ऑफ व्यू एंटरप्रेन्योरशिप। जो है वो क्यों, तो आई थिंक सबसे पहले तो मेरा दिमाग ख़राब था जिसकी वजह से मुझे शौक़ लगा कि मैं ये काम करूं। बट ऑब्वियसली आई कम फ्रॉम मैं एक बैकग्राउंड ऑफ बिज़नेस से ही आ रहा हूं। मेरे अम्मा अब्बा के साइड से भी, दोनों साइड से जो है वो बिज़नेस ही करते रहे हैं लोग। तो आफ्टर स्पेंडिंग अ कपल ऑफ ईयर्स नौकरी करके फिर मुझे हुआ कि नहीं, अब जो है ना वो लेट्स गिव इट अ ट्राई ऑन माय ओन। एंड आई थिंक जो मेन ड्राइवर था वो आई थिंक इंसान एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी में कंफर्टेबल हो जाता है, उसके बाद फिर उसको चाहिए होता है कोई ऐसी चीज़ जो उसको मोटिवेट करे फॉर दैट पर्सन टू बी एबल टू डू मोर। मेरे लिए आई कम फ्रॉम अ प्रिविलेज फैमिली। ज़िंदगी में कोई मुश्किलात मैंने ज़िंदगी में देखे नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छी पढ़ाई की, जब जो चाहा मिला, बट आई थिंक मेरे अंदर एक लॉन्गिंगनेस थी कि एक बैक ऑफ माई माइंड ये चीज़ थी कि जब मरूंगा तो अल्लाह पूछेगा ज़रूर कि मैंने तुम्हें सारी प्रिविलेजेस दी थी, तुम मेरे बंदों के लिए क्या करके आए। एंड आई थिंक फॉर मी दैट वाज द मेन ड्राइवर टू कम एंड डू व्हाट आई कंटिन्यू टू डू। सो आई थिंक दैट वाज एट लीस्ट माई मोटिवेशन इन द मैटर कि जो लोग मेरे लिए काम करते हैं या फिर एक ओवरऑल कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए, जो भी एरिया में आप डिलीवर करना चाहो। फॉर मी इट वाज माय कंट्री कि भाई मैं किस तरह से अपने मुल्क में लोगों के लिए कुछ बेहतरी ला सकूँ। एंड आई थिंक दैट वाज द मेन मोटिवेशन फॉर मी। ज़बरदस्त। आई थिंक मैं थोड़ा सा यूँ, आपका जो स्टार्टअप का नेम है अभी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अभी आप अभी कर रहे हैं। तो जो आई थिंक जो आपने वाली बात की कि जो मोटिवेशन है टू इम्प्रूव पीपल्स लाइफ और जिस तरह का यूनिक कॉन्सेप्ट आप लेके आए हैं, तो प्रॉबेबली शायद उससे काफ़ी लोगों को ये भी रुझान मिला हो। पहले कोई भी नहीं सोच सकता था कि इतना एडवांस में चीज़ें मिल जाया करेंगी, लेकिन जिस तरह का कॉन्सेप्ट लाए हो तो यू आर प्रॉबेबली इम्प्रूविंग द पीपल्स लाइफ। अच्छी एक लर्निंग है। तो अब जब हम बात करते हैं किसी भी माशरे की, जनरली ख़ानदान में भी बात करते हैं, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं थोड़ा मिसोजिनिस्ट नहीं बनना चाह रहा, मगर माशरा ऐसा है कि अगर आपके पास एक बैट हो एंड यू आर बैटिंग ओवर अ फीमेल और अ मेल, तो जनरली फैमिली में प्रेफरेंस ये होती है कि पैसे ज़रा बेटे के हाथ में ही रख दें, कारोबार कर ले, कोई चीज़ बना ले। तो मेरा जो अगला सवाल है वो मेरी इंस्पिरेशन से भी है और उनसे मैं सीखता भी रहता हूँ, मिलता भी रहता हूँ और उनकी तरफ से मुझे भी अप्रिसिएशन मिलती रहती है। तो मिस शमीम से मेरा सवाल अगला है कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जब कदम रखा, तो क्या आपसे किसी ने सवाल किया कि कैन फीमेल्स बी एन एंटरप्रेन्योर एज वेल? क्या आपने देखा कि आपने कौन सी ऐसी बैटल्स फॉरवर्ड की कि यू केम फॉरवर्ड? जैसे अली ने बताया ना कि ही वॉज वेरी लकी। व्हेन यू वेरी लकी एंड व्हेन यू वेरी अनलकी, both of these things make you very creative and make you very daring to be able to step into something. So I think मेरे लिए जो है the fact that not that very unlucky, but in the community system that we are in, थोड़ा सा confined, थोड़ा सा protected माहौल होता है ख़वातीन के लिए। एक specific age के बाद शादी हो जानी है, उसके बाद बच्चे हैं, you raise your children, but हमारे में से बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो उससे बहुत ज़्यादा आगे करना चाहती हैं। सब नहीं, लड़कों में भी ऐसे नहीं होते, ख़वातीन में भी ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ होती हैं जो उससे कहीं ज़्यादा आगे करना चाहती हैं, who think that they have it in them. So I think I was one of those. और मैं हमेशा कहती हूँ, I'm sure Mesum has heard me and so has he, that I'm a very big opportunist. That's a bad word, okay? But I used it for my favor. तो जहाँ जहाँ मौका मिला, शादी वही वक्त पे हुई, सब कुछ जैसे होता है वही हुआ, बट जहाँ जहाँ मौका मिला, I started to step a little bit forward and
that brought me to where I am today, alhamdulillah. For the question that you asked me, Mesum, ख़वातीन के लिए entrepreneurship बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है. Like Ali said, entrepreneurship is solving a problem, and if you have a good heart and a good mind, you will always want to solve a problem. And if that problem solving gets you money, what's wrong with that? It's a win-win situation, right? So I think anybody and everybody can step into entrepreneurship. पाकिस्तान के ecosystem में, especially tech ecosystem में, जिस ज़माने में मैं उतरी थी आज से 17-18 साल पहले, एक्सेप्टेंस रेट ख़वातीन का, कम्युनिटी तो साइड पे छोड़ दे, सोसाइटी में भी नहीं था, आईटी में, ठीक. सो आई हैड टू टेक अ बिगर राउट, go to outside of Pakistan and then come back to Pakistan in 2017-18 to be able to for them to accept me. और आज से 5 साल पहले काफ़ी एक्सेप्टेंस आ गई है. सो आपने मुझे शायद 4-5 साल से ही देखा होगा, उससे पहले आप मुझे जानते भी नहीं होंगे, ठीक. सो आई थिंक देयर इज़ अ ह्यूज गैप. जैसे इनिशियली आई थिंक जो बताया कि पाकिस्तान में स्टार्टअप इकोसिस्टम देर से आया है. देयर इज सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़, सो मच फंडिंग आउट देयर that anybody and everybody who has a good heart and a mind, doesn't matter what gender they are from, they can make a name for themselves. Yeah. Thank you so much ma'am for बहुत बैलेंस्ड ओपिनियन जैसे आपने लोगों को कल्टिवेट किया है कि लेवल प्लेइंग ग्राउंड है, और अब जो है वो काफ़ी हद तक चीज़ें ऐसी ख़त्म हो चुकी हैं जो पहले की बातें होती थी कि क्या चीज़ें. आई थिंक थैंक यू सो मच. अब जो नेक्स्ट अगर मैं अपने कुछ सवालात को जिस तरह से मैंने केटर किया है, सो आई हैव पुट इन सम सेक्शंस इनटू, तो अगला ख्याल मेरे जहन में यही आता है कि जब एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन क्लियर हो जाए, हमें ये भी पता चल जाए कि फ़ीमेल्स भी एंटरप्रेन्योरशिप बन सकती हैं, तो अगला सवाल ये होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप तो होती है, बट देयर इज़ अ रेसिपी फॉर मिक्स. मतलब ये कि सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप का ख्याल नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके पास एक इनोवेटिव आइडिया भी होना चाहिए और साथ में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए, तब जाके वो चीज़ एग्जीक्यूट होती है. तो नेक्स्ट सेक्शन पर्टेन्स इनटू दिस, और यहाँ पर आई थिंक एवरग्रीन सिब्तैन जो कि हर कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं हमसे और अपनी इंस्पिरेशनल स्टोरी शेयर करते हैं, तो मैं उनसे सबसे मुश्किल बाउंसर सवाल पूछने वाला हूँ कि व्हाट इज़ इनोवेशन, क्योंकि इन्होंने काफ़ी हद तक स्मार्ट चॉइस के थ्रू जो है वो इनोवेशन की है. प्लीज़ पार्डन मी फॉर एनी पर्सनल प्रमोशन, बट मैं नाम जानता हूँ. सो व्हाट इज़ इनोवेशन बेसिकली, और अगला ये कि आपने ऑब्वियसली फंडिंग भी रेस की, तो कैसे आपने इस चीज़ को अचीव किया, मेन मोटिवेशन किस तरह से मिल जाती सबको फंडिंग आसानी से, या मिथ है कुछ लोगों को फेवर मिल जाती, क्या होता है? Assalamu alaikum everyone. Thank you Mesum. I think innovation, ये जो सवाल है ये, there's a lot of parts to it. One of the, I think Ali ने वो बात की, one of the things जो हम लोग चाय पे दोस्त बैठते सब कुछ बात करते, तो हम बात करते यार ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, यार इसका कोई प्रॉब्लम कोई सॉल्व करने वाला नहीं, इलेक्ट्रिशियन देने वाला नहीं है, कोई पानी पहुंचाने वाला नहीं है. And we always have these kind of ideas, that wild ideas that we have, and we are always thinking. Now innovation does not mean tech. Let me just make it very, very clear. Innovation has got nothing to do with tech. Tech is only an enabler to scale things. Tech has made our lives easier, tech has made more accessible, things more accessible, has made more fast, more transparent, but that doesn't mean कि tech नहीं होगा तो entrepreneurship नहीं होगी, tech नहीं होगा तो innovation नहीं होगी, tech नहीं होगा तो fundraising नहीं होगी. I think that's even one of the, अगर आप जाके आज पाकिस्तान में स्टार्टअप से पहले क्या पैसे रेज नहीं होते थे, इन्वेस्टमेंट रेज हो रही थी, बड़ी बड़ी कंपनीज पैसे रेज करती है अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने के लिए, अपनी इंडस्ट्री सेटअप्स करने के लिए. And there are a lot of international funds who put money in Pakistan, have been putting money into Pakistan for so many years. So the innovation, where really innovation comes is when you understand the problem first. I think we always jump towards the solution first. I think that's one of the biggest mistake I made myself. जो business मैं कर रहा हूँ उसमें मैंने कोई 4 दफ़ा pivot किया है. पिवट का मतलब ये है कि आपका बिज़नेस कहाँ से स्टार्ट हुआ और आपको समझ में आया कि यार ये नहीं ये वाला करना चाहिए, फिर ये नहीं ये वाला करना चाहिए, यहाँ पे ऑडियंस है, यहाँ पे रेवेन्यू है, यहाँ पे कस्टमर्स है, ये प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ा है. एंड फाइनली वी आर एट आवर 4th पिवट एंड इट सीम्स लाइक दिस इज समथिंग दैट वी आर हैप्पी विथ. So when you understand the problem first in terms, in totally in depth, and you talk to the consumers, you talk to the people you're solving the problem for. हम कभी कभार अपने आप को सेंटर बनाते
और हम समझते हैं कि ये प्रॉब्लम मेरे लिए, तो ये प्रॉब्लम सब पे अप्लाई होता है. Everyone has the same problem, and everyone will call this same problem in the same way that I'm looking at it, but that's not the case. Innovation really happens when you are able to address problem of the masses in such a way that everyone can connect. If we talk about the most common one and the most famous one is Kareem, right? So Kareem की अगर हम बात करें तो क्या टैक्सी सर्विस पहले नहीं थी क्या लोगों को टैक्सी सर्विस नहीं मिलती थी, क्या रिक्शा अवेलेबल नहीं थे, सब कुछ था. They understood the problem in such a way that टैक्सी के अंदर आपको फेयर निगोशिएट करना पड़ता है, टैक्सी में आपको क्लीननेस का इशू है, टैक्सी के अंदर आपको ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी का इशू है. वो सारी चीज़ों को समझ के उन्होंने एक उसकी सर्विस, उसकी प्रोडक्ट लॉन्च की. टेक ने उसको इनेबल किया टू रीच मोस्ट ऑफ द पीपल, बट दे अंडरस्टूड द प्रॉब्लम फर्स्ट. एंड आई थिंक that's what is innovation is all about, is figuring out the problem in such depth that your solution can address that. In a way कि अगर कोई और भी competition आ जाता है तो आप ही का जो solution है that is going to be way above than everyone else. So I think that's innovation. The second part was आपका Funding, क्या था? around the Funding. Okay. So funding, again, I don't think it's something which is rocket science. You can learn how to figure out the space. This fundraising cycle. The fundraising has different ways if you are at, depending on the stage you are at. If you're talking about tech entrepreneurship और आप उसमें fund raise करना चाह रहे, so it starts from pre-seed rounds, which is more before revenue generating, and then it goes up to the level of IPOs where you exit the company. Fundraising, it is a task itself. Let me put it very very clearly. People think that कि मैं अपने business के साथ साथ चला के मैं fund raise कर सकता हूँ. I've tried to do it and I have struggled with it. Fundraising needs a lot of dedication. You will get a lot of no's. Nobody get yeses. Yes का जो conversion rate है, अगर आप 100 से बात करेंगे तो मुश्किल से आपको 4 बोलेंगे ठीक है यार let's have another call or let's have another meeting. उसमें से शायद आपको एक थोड़ी सी commitment दे and you'll have to hang on to that and find more investors around that. It is difficult but it is possible. I think as I said, innovation होना चाहिए, innovation idea होना चाहिए, but investors what ideally what they're looking for is a scalable idea. They're not looking for a small idea कि मेरी community में solve हो जाए, एक मोहल्ले में solve हो जाए या एक शहर में solve हो जाए. It has to have a large audience. It has to have a large target segment. अगर मैं target audience की बात करूँ, target market की बात करूँ, it has to be large enough. Because investors what ideally they are looking for, आपका impact है कि आप पैसे कमाना चाहते हैं. उनका कमाना, उनके पैसे कैसे कमाते हैं जब वो आपके पैसे में बिजनेस में पैसे डालते, उनके लिए 2 ही तरीके पैसे कमाने के, या तो एग्जिट होगा यानी आपकी कंपनी कोई एक्वायर कर लेगा. जब वो एक्वायर करेगा तो आपकी कंपनी में जो पैसे डाले थे उसको रिटर्न मिल जाएगा. दूसरा तरीका ये है कि आपकी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगी. स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगी तो पब्लिक सेगमेंट में आ जाएगी एंड पब्लिक इज़ वेयर यू रेज द मनी एंड दीज इन्वेस्टर्स विल गेट एग्जिट. So when you are raising money, you have to think from their perspective. It is definitely possible. You have to learn through the ropes. It is not rocket science. There are a lot of content out there which you can use. You can talk to a lot of people who have raised money. Like I think मुझसे ज़्यादा अली भाई ने पैसे raise किए हुए वैसे तो, and he's very good at it. So yeah, it is definitely possible. You just need to have a scalable idea. Tech has to be if it's a tech business, it has to be around that, and you have to be really solving a big mass enough problem. So yeah. ज़बरदस्त. I think rightly asked question with the right person. तो मैंने सिप्तैन आपकी कुछ पॉइंट्स बनाए बेसिकली, आपकी जो आपने बात की उससे ये समझ में आया कि जो मेनली जो इनोवेशन है दैट इज़ ऑल अराउंड द प्रॉब्लम, हाउ यू बेटर अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. द सेकंड थिंग इज़ कि आपने कहा कि टेक इनेबलमेंट करता है, टेक इज़ नॉट ऑल द थिंग्स. सो ये इंशाल्लाह जो है वो अभी आगे कुछ सवालात आ रहे हैं, उसी की एक बेस डल गई है कि क्या टेक ज़रूरी है और टेक के बगैर भी चीज़ें हो सकती है और टेक के साथ जो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं वो क्या चीज़ें. अच्छा, जब हम बात करते हैं फ़ंड रेजिंग की तो जैसे सिप्तैन ने कहा कि इम्पैक्ट जो है वो होगा तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट भी फॉलो ऑन करेगी क्योंकि स्केलेबल इनोवेशन होगी.
तो अली मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक डायनामिक से सवाल है जिसमें मैंने ये सवाल इसलिए डिज़ाइन किया है ताकि कम्युनिटी के लोग भी इंगेज हों और आपका रिफ्लेक्शन भी कम्युनिटी की तरफ जाए, क्योंकि बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम अ गुड प्रिविलेज फैमिली और ऑब्वियसली उनका इन्वेस्टमेंट्स का बैकग्राउंड भी रहा है, और इसके अलावा भी खोजा कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आपके पास एरिना की इन्वेस्टमेंट है, वो भी एक खोजा कम्युनिटी के पास है। तो इस तरीके से अगर हम ये नोटिस करें तो बहुत सारी जगहों पे हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं लेकिन लोगों को पता नहीं है कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं। सो काफ़ी हद तक वो स्टार्टअप्स जो कि खोजा कम्युनिटी में बनते हैं उनको पता ही नहीं होता कि हम खोजा कम्युनिटी के अंदर ही रेस कर सकते हैं वो वाली इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे सवाल आपका क्या, बेसिकली मैंने काफ़ी हद तक इलेबरेट कर दिया कि कम्युनिटी इन्वेस्टर्स का कैसे आप रोल देखते हैं और ऑब्वियसली आप अपना रिफ्लेक्शन क्या देते हैं इस बात पे। अच्छा, मेरे हिसाब से आपको कम्युनिटी से पैसे नहीं लेने चाहिए। आई थिंक देयर इज़ अ रीज़न फॉर दिस, राइट? आई थिंक जनरली द सोफिस्टिकेशन ऑफ इन्वेस्टर्स इन पाकिस्तान इज़ नॉट टू दैट लेवल, सो देयरफॉर आई थिंक कम्युनिटी का रोल कुछ और है, and I think that is where when I give that opinion then I will also step up to the plate. But I think there are people, our community of very wealthy people, but I don't think that friction should need to come in, because startups are risky businesses, right? So therefore जो है वो because of the risk associated, I don't think that we should be engaging our people for them to be able to putting in the money, because पाकिस्तान में जिस तरह का आपको the kind of funding that you need to actually scale up, वो थोड़ा सा difficult हो जाता है to raise. And I think from a startup founder perspective, जब आपके पास थोड़े पैसे होते हैं, आप एक certain point तक पहुँचते हो और फिर आपके पास वो expertise नहीं होती कि आप international investors से बात कर सकें. So I think more on the other side is I think the community needs to get together, people like myself, Sibtain, madam, and really help founders understand how to do this. And I think there's a lot of international investors. आप अगर ये आपने शुरू में जो स्पीकर ने बात की, जो पैसे आए पाकिस्तान में, ज़्यादातर पैसे बाहर से आए. So there is and you will actually be helping the country as well, because it's a great way to bring foreign investment into Pakistan as well. So I think the role should be more where we can mentor our startup founders, and the community should provide a platform through which people like myself and Sibtain and there are others, Mehdi, who can really come in and put up an effort for them to understand how this needs to be done. And then we should showcase them as a community, as people who've achieved something at the international level, and we should make that effort to take it there. So I think that's, for me, is a better approach than essentially going to high net worth individuals से आप पैसे लगाओ, because वो friction हो जाती है. That's just my 2 cents. All right. एक अच्छा पर्सपेक्टिव आपने शेयर किया, और ऑब्वियसली कम्युनिटी के अंदर जो लोग हैं उनको ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि मिलने का एक कल्चर बने ताकि लोग अब बैठें और सीखें. तो आई थिंक आज का जो सेशन है वो भी इसी चीज़ की एक कड़ी है ताकि लोग सीख सकें. अब जो नेक्स्ट सेगमेंट आ रहा है हमारा, वो आ रहा है कि हर चीज़ में पहले वो हम कहते थे ना कि एक प्रीफिक्स लगता था, जिसको हम कहते हैं मिस्टर एंड मिसेस लगता था हर नाम से पहले. तो अब जो है वो हर चीज़ का जो मिस्टर एंड मिसेस है वो टेक हो गया, एड टेक, फिनटेक, हर चीज़ ही हो गई. सो एवरीथिंग इज़ गोइंग टूवर्ड्स द टेक इटसेल्फ. तो अगर हम ये देखें कि जैसे सिब्तैन ने भी बात की थी कि टेक का ज़रूरी नहीं है होना, एक अच्छे आइडिया और स्केलेबल प्रॉब्लम सोल्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है. तो मैम शमीम, मैं आपके तरफ एक क्वेश्चन डायरेक्ट करूंगा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या, ऑल्दो आपका ताल्लुक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से है, सो दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन फॉर यू, कि एंटरप्रेन्योरशिप का ताल्लुक क्या सिर्फ सॉफ्टवेयर स्पेस से ही है या कोई और एरियाज़ में भी इनोवेशन की जा सकती है? नहीं, एब्सोल्युटली. आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप, ये सवाल का आई थिंक आधे से ज़्यादा जवाब सिब्तैन ऑलरेडी दे चुका है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट टेक. But just to add to that, whatever idea that you have, whatever problem that you're solving, whether it's in logistics, whether it's in healthcare, whether it's in education, उसको tech enable करने से जो है आपकी reach बहुत बड़ी हो जाती है. So that is absolutely there. जैसे उसने करीम का idea दिया, या जैसे आपके पास airlift का idea है, या जिस तरह के भी ideas हैं. So, but entrepreneurship does not have to do anything or everything with tech all the time. So that's a very short and precise answer to your question, but I just want to add two
ponder my thoughts on two things. That one was Sibtain was saying, and one Ali was saying. Sibtain mentioned कि pivoting जो है वो ज़्यादा इसलिए होती है कि जब आप solution पे jump कर जाते हैं और problem जो है उसको सही से समझते नहीं हैं. Absolutely. However, just want to add to that that what we also mean to say is that pivoting is not bad. It is never bad. So even if you know the problem exactly, मतलब ऐसा नहीं है, you have to have a balanced thought process. ऐसा नहीं है कि आप इतना time problem को evaluate करने में लगा दें कि आपकी गाड़ी निकल जाए, आपसे पहले कोई और ही उसको solution बना ले. So you have to have that agile mindset as well. कि जी problem है, आपने उसको समझा, उसकी depth पे गए, and then you have to take that risk. An entrepreneur has to be able to take risks. That cannot be risk aversive at all. कि अब मैं जब तक पूरा नहीं समझूंगा तब तक मैं उसको नहीं करूँगा, ठीक है? And then you always have this opportunity to see कि अगर situation change हुई है, जैसे अभी आपके सामने बहुत बड़ी example है COVID की. Companies pivoted. We pivoted. Everybody did, right? So you can pivot, and that is good. That is healthy for your business. So that was just wanted to add to that. And then what Ali was saying, and I may be absolutely wrong, Ali, here, because I for one am a big believer कि community को invest करना चाहिए, or not that. So your point about bringing more money into Pakistan, into the country, is absolutely valid. But मैं समझती हूँ कि हमारी बहुत बड़ी community and very wealthy community is not in Pakistan. It's outside of Pakistan. So if अगर हमारी community में अच्छे investment idea, unless and until there's something that I've missed, that I have not seen the underlying meaning of, अगर ऐसे ideas हैं, mentoring is absolutely all for it. We've already, I think, put those points down with Mesum. Lekin I feel that community there should be a fund, maybe, to at least do an incubation center for the community, maybe bring them forward so that we can bring them to a point where they can go to a national incubation center or a national accelerator. क्योंकि और पाकिस्तान में obviously VCs हैं, ऐसा नहीं है, and पाकिस्तान में VC having a fund or being a VC is a new concept, but पिछले 2-3 साल में आया है, और we've seen Pakistani VCs also invest into smaller startups. So my take on this is कि community के जो बड़े हैं उनको देखना चाहिए. Maybe that's down the line, that's something that we should be thinking about, having a funding or a VC or something. I think well summed. मेरी आपने शायद you have spoken my heart out कि incubation centers plus जो आपकी training labs हैं और capacity building है, obviously इसका सवाल आगे भी आना है जहाँ पे education और exposure का section आएगा. बट इससे पहले कि मैं जो टेक वाला जो एरिया है उसको रैप अप करूं, सो काफ़ी लोग हम लोग क्योंकि इंडस्ट्री में बैठते हैं तो आपस में तो बात करते हैं, एड टेक है, फिन टेक है, लेकिन काफ़ी लोगों को अभी ऑब्वियसली इन इंडस्ट्रीज़ का मालूम नहीं है और ये भी नहीं पता कि आगे किस तरह की टेक इंडस्ट्री आ रही है. मतलब लाइक रियली मैंने कल एक न्यूज़ पढ़ी कि जहाँ पे अमेज़ॉन ने जो है वो वन हेल्थ केयर को ख़रीद लिया. अब वो क्यों ख़रीद लिया? वाई वुड अमेज़ॉन बाय वन हेल्थ केयर, राइट? लेकिन अब चीज़ें उस तरफ मूव करती जा रही हैं. कल से हम बोलते थे कि हेल्थ का क्या ताल्लुक है, यार डॉक्टर के पास जाना है तो हमने मैनुअली जाना है, मतलब वी हैव टू गो, मोबाइल पे हम नहीं डॉक्टर हो सकता. बट आपको पता है कि यार फ़लाँ ऐप है, मैं नाम नहीं लूँगा, बट फ़लाँ ऐप है, ये है, आप जाकर उसके ऊपर लाइव कंसल्टेशन ले लो. या आप जो है वो ऑब्वियसली कुछ कंपनीज़ ने तो ये भी कर दिया है कि बैंड्स दे दिए हैं कि आपकी वो हेल्थ को मॉनिटर कर रहे हैं, वो फिर आपको पैकेज भी दे देते हैं इस चीज़ का कि आप जो है वो हेल्थ केयर कर लो और फिर आपकी वो मॉनिटरिंग हो रही है. सो हर चीज़ में टेक आते जा रहा है. तो यहाँ पे जो है वो अली मैं आपसे बेसिकली ये सवाल पूछूंगा कि आप ख़ुद भी जो है वो फिनटेक के अंदर मौजूद हैं, तो आप कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ देखते हैं जिनके साथ टेक लगा हुआ है और लगने आने वाला है? आप क्या देखते हैं, फ्यूचर किस तरह से देखते हैं इनेबलमेंट के हिसाब से? सो हमारी जितनी बड़ी पॉपुलेशन है, आई थिंक 3 मेन टेक स्पेसेस जो दे विल रियली टेक ऑफ. बट अगेन पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, आप किसी भी एरिया के अंदर चले जाएं. बट हेल्थ टेक, एड टेक एंड फिनटेक आर आई थिंक द 3 sort of major ones that really will catch the eye. And then obviously जो है वो it is happening, under the radar चीज़ें हो रही हैं in work in blockchain technology. Unfortunately हमारे अभी भी जो regulators हैं
वो उस लेवल की सोफिस्टिकेशन या कंफर्ट के ऊपर नहीं आए हैं, बट जो है वो हमारी इंटरेक्शन रहती है उनसे, एंड आई थिंक देर slowly and gradually coming to that. I think there's a very very big opportunity in the blockchain space, and I think उस space के अंदर जो है वो हमें अपनी community के लोगों को train भी करना चाहिए, because I think Web3 is going to be the future. Not just me, I think this is a world opinion. So दुनिया उस तरफ move कर रही है, and I think उस तरफ effort करनी चाहिए. So you know, these are the three areas, and blockchain definitely sort of tops it up. Just to clarify, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको incubation centers or mentoring sessions या incubation centers, that those could definitely be done by the community. What I'm talking about is actually sort of going into the funding side of things. I mean, completely respect your opinion on this, but I just feel that me and Sibtain both have had a couple of interactions in this regard. So obviously everybody speaks with their own sort of experiences, but generally जो है वो I think जो sophistication of VC investing है वो मैं not just for the community but general मैंने यही कहा ना, पाकिस्तान के investors के पास अभी तक वो sophistication नहीं आई है, and I think from a founder's perspective the worst thing that can happen is कि आपका investor जो है वो is always down your throat saying कि अब क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है. So I think the international investors are a lot more comfortable, they understand the nuances of investing और उसके क्या implications है, the fact कि भाई आपके पैसे डूब सकते हैं. तो उस perspective से I just feel कि ये एक ऐसा friction है जो I think हमें अपनी community के अंदर नहीं लाना चाहिए, but just my 2 cents on it. थैंक यू. सो जो नेक्स्ट एरिया जो हमने सेक्शन बनाया है वो एटीट्यूड और मोटिवेशन का है. सो जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं हम, तो वहाँ पर सिर्फ ये नहीं होता कि ऑन द डे 1 और फॉर द फर्स्ट वीक और द फर्स्ट मंथ यू आर वेरी वेरी एक्साइटेड, आप डे इन डे नाइट दे रहे हो और आप बहुत एक्साइटेड हो, बट इट्स अबाउट कीपिंग डूइंग द थिंग, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस, और ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं एंटरप्रेन्योरशिप में. सो इट्स नॉट अ ईजी बॉल गेम. सैलरी वाले लोग जो होते हैं ना वो आराम से जाते हैं, सुबह चाय चाहिए हमें, ये सब चीज़ें. एंटरप्रेन्योर को जो है ना वो सब इनकंसिस्टेंसी की आदत नहीं होती, उसको मतलब चीज़ों को करना भी होता है और ऑब्वियसली उसको ये भी पता होता है कि मुझे हर्डल्स भी आनी है और सब चीज़ें खुद से फाइनेंस भी करनी है. सो यहाँ पर मेरा लास्ट सवाल जो अली से था उसी का थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट तब्दील करते हुए सिप्तैन से ही उनकी एक्सपीरियंस और लर्निंग में जानना चाहूँगा कि ऑब्वियसली जैसे अली ने बात की कि एडटेक आ गया है, फिनटेक आ गया है, ऑब्वियसली फिनटेक का ही स्पिन ऑफ इंश्योरटेक आता है, लेकिन आपने इंश्योरटेक के अंदर कदम रखा, मैंने देखा कि आपने एक पोर्टल बनाया, किस तरीके से आप लेके चले. ऑब्वियसली जब आप इनोवेट करते हैं और चीज़ों को एलिवेट करके ले जाते हैं, कस्टमर का माइंडसेट स्टिल अपने लेवल पे कन्वेंशनल होता है. मतलब जब करीम और एयरलिफ्ट आया तो लोग बोल रहे थे कि ये टैक्सी जैसे ही चलेगा, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली लोगों ने अडेप्ट किया. तो सेम वुड हैव हैपेंड इन इंश्योरटेक एज वेल. लोग ऑफिस पहुंच गए होंगे, मेरा क्लेम निकाल के दे दो, पैसे कैश में दे देना मुझे. तो हो सकता है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको आए हों. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंश्योरेंस बहुत टफ और सेंसिटिव इशू है. मतलब इंश्योरेंस बड़ी खतरनाक मूवमेंट भी कराई जाती है ना, किसी के मरने की इंश्योरेंस है, किसी बीमार होने की इंश्योरेंस है, तो ऑब्वियसली लोगों के सेंटिमेंट उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं. तो इतनी टफ स्पेस में आपने किस तरह से काम किया? ऑब्वियसली क्लाइंट फेसिंग भी है, मार्केट को क्रैक करना, लोगों से मिलना, कैसे किया? अच्छा, थैंक यू मीसम. इंडस्ट्री ऑब्वियसली बहुत डिफ़िकल्ट है. बिफोर आई टॉक अबाउट दैट, आपने जो पहले सवाल पूछा था उसमें एक चीज़ मैं हाईलाइट करना भूल गया कि फंड रेजिंग में जो वन ऑफ द क्रिटिकल थिंग्स दैट हेल्प मी, एंड आई थिंक दैट इज़ वन एडवाइस यू विल हियर फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पीपल हु रेज मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स, इज़ नेटवर्किंग. And the first fund that we raised was from Oman Technology Fund, which was a sovereign fund. And the way I got there was only through networking. I was part of an incubator, Nest.io, and Jahan Ara was meeting these guys who came here from Oman. They wanted to meet startups. तो उन्होंने जो है वो 10-15 startups जो है ना उनको उसमें से मुलाकात कराई. I met them. And that's how one thing led to another, and then things started happening. It took 6-8 months for things to happen, but eventually it did happen. And similar thing with the next fundraise that we did, came through a very strong reference who've been following us, who've been tracking us. So funding के लिए networking generally आपके business को grow करने के लिए, even hiring करने के लिए भी लोगों के लिए networking is the most critical component if you're an entrepreneur.
एंड इट्स हार्ड थिंग, लगता ही है कि बहुत ही कोई फेक चीज़ है यार, लोगों से मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, बट that is what we are all social animals. We only know about things when we hear about it directly through someone. Yeah, so that thing. The second thing which I also want to talk about was the funding from the community. I think there is definitely some scope, or at least some kind of effort should be done for funding. I think एक जो चीज़ जो हम मिस आउट कर रहे हैं वो ये है कि VC funding is not the only route. वेंचर कैपिटलिस्ट से जो हम स्टार्टअप्स ने पैसे रेज़ किए हुए, हमने रेज़ किए हुए, अभी ने रेज़ किए हुए, और भी बहुत सारे स्टार्टअप्स है. दैट इज़ नॉट द ओनली राउट. प्लीज़, आई कैन टेल यू दिस मच, दैट VC route is only for people who have really who can handle tough situations, because these investors are out there to make a return on their investment, and they're not going to just let you go with their money just like that. And they have their own way of looking at things. One of their most important thing which I have seen is valuations. All they care about is valuation, कि आपकी कंपनी की वैल्यूएशन क्या है. अब वो बंदे 4 लोग रूम में बैठ के वैल्यूएशन लगा रहे, that's about it. That's all it matters, right? You can make a company with no revenue and call it $100 million company. That has happened in the last 2 years. So VC route ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी कम्युनिटी में सेटअप करें. I think there could be a friends and family round, which is helping small entrepreneurs or people who want to set up some technology firm, who want to offer outsourcing services, BPO services, but they need capital, and they have a business plan, they have a good team, but they don't have capital, right? And these investors from our community can definitely come in. These have to be like accredited investors. I'm not saying anyone and everyone starts putting money into these into these entrepreneurs, but there should be some way of supporting these entrepreneurs who are the future of our community. Because just to give you some perspective, 99% of the startups do not raise money from VC. And even if you raise one round, that does not mean that you will raise the next round. And once you raise the first round, you have to keep raising money unless you are profitable. And becoming profitable in a VC-backed startup is really hard. It sounds very fancy, sounds very easy, but you need to keep on growing. And when you keep on growing, you have to keep on burning money, because you're acquiring customers, you're hiring good talent. So all of that looks very fancy from the outside, but I think there is another route which our community should take. The main question, sorry, I am just taking a lot of time to come to that point, was primarily about, can you repeat that, because I actually forgot that. All right. So ये जो main question है, इंश्योरेंस वाला, सॉरी, मुझे याद आ गया मुझे, मेरे ही मतलब का था. So हाँ. So insurance, right? So I lived in England for a while. I did my education from there, and I moved to England while I was 18 years old. मेरे फादर ने मुझे जो है उस वक्त पहले साल की फ़ीस दी और बोला कि अब जाओ और पढ़ो. And I did not go by choice. Let me just make it very clear. It was forced upon me. Because there were other people in my family who were going abroad, and it was more of a peer pressure thing than anything else. I'll confess to that. And I moved there, and when I started working, because I had to pay for my own expenses, personal expenses, so I started working. I worked at a lot of places, and a lot of places like food places, restaurants. And I saw that वहाँ पे जो opportunities थी, जिस तरह के tech startups वहाँ पे खुल रहे थे, जो insurance के अंदर specifically मैं बात करूँ, वहाँ पे हर बंदे को insurance लेनी पड़ती है, घर की लेनी है, गाड़ी की लेनी है, life की लेनी है, because of a lot of reasons. And it was so easy and completely straightforward. And the value I saw, because insurance is all about putting you, making you, protect you from the bad times, right? And it sounds obviously very scary, but financial protection is one of the most important things in your life, right? If you are privileged, which 90% of the people are not, right? You have to protect your medical expenses, your other expenses, the other assets that you've bought. So for me, it was more of a cause rather than a business, to be honest with you, when I started. Because पाकिस्तान आए तो यहाँ पे इंश्योरेंस का कोई भी रुझान नहीं था, well था, लेकिन it was mostly very in specific segments, be it fire, marine, or property insurance for corporates, or health insurance only offered by FMCGs, right?
And that really struck me कि यार कि पाकिस्तान में 70-80% of the companies that are there, who, they do not have like hundreds of employees working, right? But they cannot offer the same benefits as a large corporation can. So why don't we come up with a product which equalizes everyone and help even small companies to offer similar kind of benefits as a large company? And that's what the biggest cause was. And we obviously help consumers with claims, and when our motto is that when we do insurance, we make sure that we give out the claims. And since we are not an insurance company, we don't mind giving claims. And we make sure that we help our customers with claims. Because, and as I said, कि जब भी हम ये इंश्योरेंस हमसे कोई खरीदता है तो हम उसको एक दुआ भी देते हैं साथ, और वो दुआ ये है कि अल्लाह करे आपको कभी इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना पड़े. So even this is one of those unique products that you give someone, but you tell them not to use it, right? I hope you don't have to use it. But if you have to use it, that person because in case of health, if you talk about, it can actually, you may have to take out loans. I think Fatmia is doing a tremendous job, but they understand as well. आप लोगों ने भी insurance निकाली है. This has helped the community in such a way that anyone who maybe it's not linked to your income, it is not linked to how much you make, right? It gives you that financial sense of protection. And I think health, the way, as I said, this is our fourth pivot, and now we are finally staying with this thing, which is the health side. And I think this addresses a massive problem in this community and the society as well. So yeah, I think the financial protection was the initial thought. And then now what we are doing is more closer to the human side of the things and how it impacts the real household. So yeah, that's the main reason. And then obviously we make money behind that as well. So that's the most. I think Yeah. बहुत अच्छी आपने बात की कि शायद मैं इसका की टेक अवे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मैंने लिखा था, सो जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये बनी है कि की टेक अवे इज़ हैविंग बीइंग एसोसिएटेड टू अ कॉज. सो डे इन डे आउट आपके जहन में जब कॉज होगा, सो यू कीप रनिंग दैट फायर कि आप चलते रहोगे. एंड बीइंग कस्टमर सेंट्रिक, जैसे आपने कहा कि क्लेम आता है तो आई डोंट माइंड बिकॉज आई एम नॉट पेइंग द क्लेम, आई एम बीइंग द एडवोकेट ऑफ द कस्टमर. सो यही शायद वजह है कि कस्टमर आपके पास आता है कि ही बिकम्स माई एडवोकेट. मैं डायरेक्टली वहाँ चले जाऊँगा तो मैंने खुद नहीं डील करना है. सो इफेक्टिवली बहुत अच्छे तरीके से, एंड अगेन प्रॉफिट मेकिंग एंड मनी मेकिंग इज़ ऑलवेज द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस सक्सेस. सो अब जो अगला क्वेश्चन आता है मेरा जहन में, पार्डन मी मिस शमीम, उसके बाद आपका भी सवाल आ रहा है. सो अली, आपका जब मैंने कैरियर देखा तो आपने बैंकिंग से तो स्टार्ट किया, इवन यू टोल्ड द पीपल कि आपको इतना मसला नहीं हुआ, यू आर कमिंग फ्रॉम अ प्रिविलेज बैकग्राउंड. बट डिस्पाइट दैट हर एक बंदे की अपनी एक तरीक़ेकार होता है काम करने का. सो आपने कहा कि मैं जो है वो कन्वेंशनल माइंडसेट के साथ नहीं था. आपने पहले एक स्टार्टअप किया, उसके बाद फिर आपने ऑब्वियसली इट एंड अप. अब वो ये वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से, तो फेलियर तो इज़ अ पर्सपेक्टिव. लाइक ए फेलियर इज़ अ पर्सपेक्टिव. लोग कहेंगे शायद फेल हो गया, आप कहोगे मैंने बहुत कुछ लर्न कर लिया. सो ऐसे ही होता है. ये ख़ास तौर पे सवाल ये मैंने आपसे इसलिए पूछा है बिकॉज आई सी यू एज अ पर्सन जो कि जिसको कहते हैं ना कि रेज डाउन हो गई वॉल्स एंड आई अगेन बिल्ड देम. So you have built that empire once again and coming back for the अभी. So my praises for you. लेकिन कैसे आपने किया, और ख़ास तौर पे कम्युनिटी के साथ ये शेयर करें कि मतलब जैसे मेरे जहन में आया कि मुझे ये काम करना चाहिए, मैंने किया, जैसे सिब्तैन ने बताया कि पिवट करना चाहिए, लेकिन पिवट करते करते आपको पता चल गया कि ये वो स्पेस नहीं है जहाँ पे या तो मैं पैशनेट था या तो ये वो स्पेस है कि जहाँ पे कस्टमर ही नहीं है. तो कैसे आप अपने आप को ये समझाएं कि कोई बात नहीं, जो किया उससे सीखा, अब आगे बढ़ो, कुछ नया करो, और कुछ नया करो, वापस सैलरी पर ना आ जाओ. अच्छा, तो कपल ऑफ थिंग्स. एक तो बिज़नेस आपको खुद दिखाता है कि वो किधर जा रहा है, बट जब कोई चीज़ आप अपने ग्राउंड अप से बिल्ड करते हो तो उसको लेट गो करना बहुत मुश्किल हो जाता है. मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था. एंड उसकी इम्प्लिकेशन ये हुई कि मैं एक बिज़नेस को चलाता रहा वेयर आई न्यू कि इसके अंदर से कुछ निकलने वाला नहीं है, जिसकी वजह से मैंने खुद पे बहुत ज़्यादा डेट भी चढ़ा लिया. बट इवेंचुअली द सिचुएशन, द मार्केट, माय पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन एक्चुअली गॉट मी टू मेक दैट डिसीजन. जब वो डिसीजन लिया तो बहुत डिफ़िकल्टी हुई बिकॉज़ 10 साल की बैंकिंग एक्सपीरियंस के बाद जो है वो जब मैं वापस गया मार्केट के अंदर,
और ये मैं किसी को डराने के लिए नहीं बोल रहा, बट रियलिटीज़ हैं जो आई थिंक जो भी लोग एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, दीज आर थिंग्स दैट दे शुड नो, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई केम आउट ऑन द अदर साइड। बट जो है वो जब मैं मार्केट में गया वापस नौकरी ढूंढने के लिए, तो मुझे जो तनख्वाह थी वो मेरी पहली नौकरी से भी कम ऑफ़र हुई। सो यू नो मैंने एंड वेरी सीनियर पोजीशन समबडी, तो मैंने उनको ये बोला कि सर इन डॉलर टर्म्स आप मुझे तनख्वाह उतनी ऑफ़र कर रहे हो जो मेरी पहली नौकरी से कम है। सो एंड आई डिड डाउट माई सेल्फ, आई डिड सॉर्ट ऑफ कंसिडर गोइंग बैक इन टू द वर्क फोर्स एज वेल। अगेन मेरी नौकरी के बारे में कोई ऐसी बुरी वो नहीं है। आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी इफ़ यू डू वेल इन इट एंड स्ट्राइव फॉर इट। बट आई थिंक जो है वो व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ अल्लाह पे भरोसा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट जो है ना वो मैंने बहुत सारे लोगों के साथ ये बातें शेयर भी नहीं की, मे बी मेरी फैमिली के साथ भी नहीं। बस अल्लाह से दुआ करता रहा और अपनी मेहनत करता रहा और उसने फिर वापस हाथ पकड़ लिया। सो आई थिंक मोर माई सक्सेस इज़ बिन माई परसिवियरेंस, कि एक चीज़ के पीछे लगे रहो और कोशिश करते रहो। दरवाज़ा खुदा ज़रूर खोलेगा, मेरे लिए खोला और बहुत अच्छा खोला। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह माई कंपनी इज़ वैल्यूड एट नाउ $90 million. I 1.5 year ago I couldn't even think I'd be at this point, talking to people like yourselves and telling my story. तो उसने एक बड़ा करम किया। डेफिनेटली जो है ना वो दुआएं काम आई और किसी की दुआ काम आ गई। सो आई थिंक परसिवियरेंस इज़ समथिंग दैट एवरीबडी शुड कीप ऑन डूइंग। Failure is difficult, but definitely a lot of learning, and definitely where I am today, my last failure did contribute to me being here, in terms of those are things that I used to leverage and understand the opportunity better. So I think जो है वो कोई भी चीज़ गलत नहीं होती। अल्लाह ने मुझे हमेशा सही जगह पर सही टाइम पर डाला। कुरान की आयत है, मतलब ऑब्वियसली मैं आपको पॉइंट कोट नहीं कर सकता, बट आते जाते मैं गाड़ी में सुनता हूँ, तो एक दिन जो है वो मानी पढ़ी जा रही थी, तो उसमें ये था कि कभी कभी आपके साथ कुछ होता है और आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए बुरा है, लेकिन एक्चुअली खुदा जो है वो आपके लिए राह बना रहा होता है फॉर योर सक्सेसेस। एंड आई एम लिविंग इन वॉकिंग एग्जाम्पल ऑफ दैट, कि कहाँ पर कोई नौकरी नहीं रख रहा था। एंड जस्ट टू मोटिवेट पीपल हु डू गो इनटू दिस एंड मे बी विल फॉल, फैसल बैंक नाम भी ले लेता हूँ। फैसल बैंक में जो है वो एक अपॉर्चुनिटी आई, जहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट हेड फॉर बिजनेस बैंकिंग एंड एम्प्लॉय बैंकिंग आया। सो ये आइडिया मेरे पास चल रहा था काफ़ी टाइम से, तो मैंने बोला ज़बरदस्त, आई विल गो हियर। जो पर्सन अक्रॉस द टेबल बैठा है वो मुझे जानता भी, मेरी कैपेबिलिटीज़ को भी जानता है, तो ये नौकरी करेंगे, ये वाला प्रोडक्ट फैसल बैंक में लॉन्च करेंगे और ज़बरदस्त काम हो जाएगा, स्टार हो जाऊँगा। अनफॉर्चुनेटली वो नौकरी भी नहीं मिली। एंड देन जो है वो आई थिंक 6 months डाउन, फैसल बैंक ने हमारी सक्सेसेस पढ़ के एंड कुछ बैंक्स के साथ हमारी अपॉर्चुनिटीज़ और जो हमने साइनिंग की उनके साथ हमें बुलाया। तो उनसे पूरी डिस्कशन होने के बाद जो है वो बंदा जिन्होंने मना किया था वो तो चेंज हो गया, बट मैंने उनके कंज्यूमर हेड को बोला कि सर आपको पता है आप लोग का मेरी आई हैव अ स्पेशल एफिनिटी फॉर फैसल बैंक। सो ही सेड व्हाई? तो मैंने बोला क्योंकि अगर आपने मुझे उस दिन नौकरी पे रख लिया होता तो शायद मैं इधर नहीं होता। सो खुदा राह बनाता है, मेहनत करते रहें, एंड दैट्स व्हाट इट इज़। आई थिंक परफेक्टली आंसर्ड, और काफ़ी लोगों को मोटिवेट भी कर दिया और इमोशनल भी इन टर्म्स। एनीवेज बहुत आई थिंक ये आपने जो बात करी है वो ऑब्वियसली ये सवाल शायद मैं कम्युनिटी की नुमाइंदगी अपनी जगह पे, लेकिन पर्सनली मैं अपनी कहता हूँ कि आपने दोबारा से मेरे अंदर वो फायर बर्न अप कर दिए। सो कुडोस एंड थैंक यू। नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वो ये आता है कि एक मज़े का मैं आपसे छोटी सी एक स्टोरी शेयर करता हूँ। अभी हमारे साथ मौजूद हैं पैनलिस्ट। अब जो हमारा अगला सेक्शन है वो है एजुकेशन और एक्सपोजर का। सो मुझे याद है 2016 के अंदर मैं ACCA का फ़ाइनल पेपर दे रहा था और 2 दिन बाद मेरा पेपर था। तो आप तो शायद ये सोच रहे होंगे कि बंदा पेपर की तैयारी कर रहा होगा, उसके नोट्स लिख रहा होगा, बजाय कि मैं कमरा बंद करके नोट्स तो लिख रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद मेरे पास एक गूगल एड्स आता है कि IBM की बिग डेटा एनालिटिक्स की सर्टिफिकेशन आप ट्राई करें ऑन कोर्सेरा, और मैंने उस पर क्लिक कर दिया। वहाँ से
मुझे मेरा पैशन मिलना शुरू हो गया कि एक्चुअली शायद ACCA मेरी कभी लाइन ही नहीं थी, और वो एक छोटा सा क्लिक जो है ना, वो कहते हैं ना क्लिक थ्रू, वो एक एक्सपोजर बन गया। वहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया। मुझे उस रात को याद है कि मैंने पेपर का पक्का पढ़ा नहीं पढ़ा, तैयारी अच्छी हो गई, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, पेपर पास हो गया, लेकिन उस रात को मैंने वो बैठ के सर्टिफिकेशन सिर्फ पास की थी, बैठ के कि वो कोर्स कंप्लीट हो जाए। एक सर्टेन कोर्सेरा पे आप सब लोगों ने कोर्सेज देखे होंगे, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाए। एजुकेशन और एक्सपोजर जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मैं इस वक्त अपने भाई की भी बात कोट करता हूँ। मैंने 8th क्लास में बड़े मेरे बुरे मार्क्स आए थे, तो मैंने वहाँ पे अपने भाई से पूछा था कि ये सब कुछ तो ठीक है, कंप्यूटर साइंस में मुझे बड़ा शौक है, सब चीज़ें, ये पाकिस्तान स्टडीज़ क्यों पढ़ाते हैं, ये फ़लाँ क्यों पढ़ाते हैं। तो तब मेरे बड़े भाई ने मुझे समझाया था कि ये जो है ना, आपको एक रेसिपी के लिए तैयार किया जा रहा है कि आपका एक्सपोजर बने। इतने सारे सब्जेक्ट्स आपको बताए ही इसलिए जा रहे हैं कि आपका एक्सपोजर बने एंड यू फाइंड अ मोटिवेशन आउट ऑफ इट कि मुझे किस तरफ जाना है। तो अगर कोई पाकिस्तान स्टडीज़ में इन्वॉल्व है या कोई जोग्राफ़ी के अंदर इन्वॉल्व है, तो ऐसा नहीं कि वो अनसक्सेसफुल है। मतलब अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप फ़लाँ बन जाओ, वो हर्डिंग बिहेवियर जो होता है कि फ़लाँ बन जाओ, आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे, आप ये कर लो, फ़लाँ सक्सेसफुल हो जाओगे। सो आई नो कि $1 मिलियन जो है वो मोची भी मौजूद हैं, जो कि $1 मिलियन और $1 बिलियन बना रहे हैं। सो वो कैसे बना रहे हैं? हमारे यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं है मोची की, हम ये कहते हैं मोची बनेगा मेरा बेटा, तो ये चीज़ नहीं होती। पैशन फाइंड और एक्सपोजर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ख़ास तौर पे मैंने स्टोरी इसलिए दी आपको कि अब जो सेक्शन है वो एजुकेशन और एक्सपोजर का है। इन सब की स्टोरी मुझे 100% नहीं मालूम, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि कोई ना कोई एक छोटी सी बात क्लिक की होगी, किसी एक कॉन्फ्रेंस में किसी से मिल के कोई बात पता चली होगी, और वो इंस्पिरेशन और एक्सपोजर बनता है, और फिर उन्होंने उसके ऊपर एजुकेट होना शुरू किया, सेल्फ लर्निंग करना शुरू करी, और फिर उसके बाद अपने स्टार्टअप्स की तरफ आगे बढ़े। सो अगला जो मेरा सवाल है वो मैम शमीम से है कि एजुकेशन और एक्सपीरियंस, आपने खुद ने भी, आपकी जो जर्नी है वो सेल्फ ड्रिवन काफ़ी हद तक जर्नी है, तो किस तरह से एक स्टार्टअप को भी सक्सीड करती है और एज अ प्रोफेशनल भी आपको आगे लेके जाती है, एजुकेशन और एक्सपीरियंस आपका? अच्छा, जब ये सवाल मैंने पहले देखा था तो मैं समझती थी यू हैव टू चूज़ बिटवीन एजुकेशन और एक्सपीरियंस। ओके, आई थिंक अगर मैं अपनी बात करूं, व्हेन यू वर टॉकिंग आई वाज जस्ट आई हैड अ लॉट ऑफ विजन्स कि जी इफ यू लुक बिहाइंड एंड थिंक ऑफ things that happen. I think ये जो going back to, if you go back to education, I think the recipe of education जो आप लोग को दी जाती है, और हम जैसे हमारे यहाँ एक thought है जी वो herd वाला कि जी वो फलां कंप्यूटर साइंस में जा रहे। अब मैं डॉक्टर इंजीनियरिंग की बातें नहीं करूँगी, वो हमारे ज़माने में होती थी, आपके ज़माने की बात करूँगी कि फ़लाँ जो है वो कंप्यूटर साइंस में जाए तो जी सारे कंप्यूटर साइंस में उसके पीछे पीछे लग जाते हैं कि सब ने कंप्यूटर साइंस में जाना है। I think that needs to change, and education does change that, and when you mix education with experience, that absolutely changes that, and I'll give you an example of that. हमारी फैमिली में ना सारे टेक्नोक्रेट्स हैं, और सारे कंप्यूटर साइंस और मेडिसिन, और कोई भी जो है ना वो फाइनेंस साइड पे, एक्सेप्ट फॉर माय डैड, बट माय जनरेशन ऑनवर्ड्स उसमें नहीं है। सो एंड आर्ट साइड पे और क्रिएटिव साइड पे कोई भी नहीं है। So my son wanted to go into creatives and he did his A-levels, and I got very upset about it कि ये आप क्या कर रहे हो? I mean you did your A-levels in sciences, why do you want to go into that? And I was very upset, and at that point I was in the valley. मैं सिलिकॉन वैली में थी, मैं डिफरेंट इवेंट्स में जा रही थी, मैं डिफरेंट कंपनीज़ में जा रही थी। सो आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू EA, और उसके जो है वो हेड ऑफ इंजीनियरिंग से मेरी मुलाकात हुई। वी सैट डाउन, वी वर टॉकिंग, एंड देन आई टॉक्ड अबाउट हर टीम कि आपकी टीम में कैसे लोग हैं, कितने लोग हैं, क्या। आई हर्ड दैट एवरी टीम इन EA require a creative on the table, because they cannot think without a creative, right? If you have a set of engineers and if you don't have diversity on the table, and that diversity obviously apart from being gender diversity, it also has to be a diversity of different disciplines, right? तो वो जो है, और different disciplines, तो वो I heard that and I was like, wow, I never thought of it from that angle. वहाँ से मैं जब बाहर आई, the first call that I made is to my son, and I said, जो करना करो, it's absolutely fine, I see a route, I see where you're going. You don't see it now, but I see where you're headed. So just do whatever you want to do. My son is doing his undergrad in history and anthropology and English literature, and he's a game design intern, right? मतलब पूरी ज़िंदगी गेम खेलता रहा है, और मैं सोचती थी क्या करेगा बड़ा होके,
and now in a very big company in Pakistan, he just got a game design internship. So I think it's about thinking outside of the box and thinking कि सिर्फ यही जो सब जिस उसमें जा रहे हैं यही, this is not the end of the world. There's so many new fields out there. So education and entrepreneurship, education and experience absolutely does it for you. All my life, what I've learned, and I have not had the opportunity to complete my education the way these guys have. I have done it in bits and pieces, as and when the opportunity came to me, after marriage, before marriage, abhi, jabhi bhi. So I did that. So, but I came to a point where experience was so much that I wanted to do a PhD, and my professor said, "नहीं कोई ज़रूरत नहीं है आपको करने की, because what will the PhD teach you that you don't know already, being 20 years into the industry?" So I think they both go hand in hand. Not that you should not. You should always. I still want to pursue one, but I'm just saying that they both go hand in hand absolutely. And education से Mesum knows very well that मेरा बहुत close राब्ता रहा है, बहुत मोहब्बत है मुझे skills and education and diversity education की तरफ. So that is a passion that I pursue as a side gig, and so skills, youth education, youth skilling, especially in the tech sector, diversity, gender diversity skilling, upskilling in the tech sector is something that I work on as a private project, also on the national level, or that is something that I would like to, on this forum, make a recommendation, a suggestion to Fatimiyya College and to the Jamaat कि आपका जो curriculum है, देखें हम national level पे जाके curriculum refinements कर रहे हैं, हम different universities का, I'm sure he might be sitting somewhere, Ali might be sitting, we are all sitting on different boards and we are refining their curriculum for them, for different universities, FAST ले लें, कोई भी ले लें, और फिर national level पे HEC के साथ जाके. So I think that you need not us, but people like us, बहुत हैं, there are many out there, we're just one of the few. To be sitting on your, entrepreneurs to be sitting, industrialists to be sitting on your board as externals, to be able to review your curriculum and tell you what is out there today, ताकि जब आपका बच्चा जो है वो इस कॉलेज से निकलता है तो उसको भी पता हो, और they are also ready for the outside world, and the world is also accepting to them, because इस वक्त सबसे बड़ा problem जो हमारे पास आ रहा है ना, वो यही आ रहा है कि हमारा इतना ट्रेन रिसोर्स जो पाकिस्तान से निकलता है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द टेक इंडस्ट्री, 25,000 ग्रेजुएट निकलता है, उसमें से जो है वो हम 10% को हायर कर सकते हैं, बाकी इज़ नॉट somebody that we can hire. We have to train them, which is why so many programs are going on. Vocational training के national level पे आप लोग देख रहे होंगे, जो लोग follow करते हैं वो देख रहे होंगे. So I think हमारी जमात education में इतना काम कर रही है. This is just a missing piece in the puzzle that you should put in and involve the industry, जो community की industry, because फिर हम वो काम दिल से भी करेंगे. ठीक है, हम पैसे नहीं मांग रहे हैं आपसे, आप देना चाहें तो कोई बात नहीं, लेकिन हम वो काम दिल से. आई थिंक बहुत अच्छी आपने बात की है, और इस पे मैं पर्सनली ये कहूँगा कि मेरे पास एक कम्युनिटी ने रीच आउट किया कि हमें MIT बनाना है. अब M से आप समझ जाए, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कह रहा हूँ, M कम्युनिटी आप समझ गए. सो मैं कह रहा हूँ कि वाई नॉट मेक ए फिट फातिमिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी के स्किल्स सिखाएं. और आई थिंक ये बहुत फास्ट फॉरवर्ड है कि हमारी कम्युनिटी को ये स्किल्स की ज़रूरत है. जो ब्लॉकचेन की बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, वेब डेवलपमेंट की बात की, ये सारे वो एरियाज हैं जिसके लिए कम्युनिटी को बहुत ज़रूरी है. I just want to add a couple of things. Sorry, Mesum, when you said, I remembered a couple of things. एक तो ब्लॉकचेन की बात की, अली ने बहुत अच्छी बात की 2016 में. एंड लेट मी टेल यू, जो अभी सिप्तैन ने भी बात की नेटवर्किंग की, 2016-17 में जब ब्लॉकचेन वाज वेरी न्यू इन पाकिस्तान, नॉट इन पाकिस्तान, इन द वर्ल्ड, due to networking, I got an opportunity to go on a training, 10 days training to the Valley. $20,000 की वो training थी. I got it for free because of my network, because of being there in the moment. Like he said, he was there with the Oman guy. I was there in the moment. I got that training. I went there. I brought it back to Pakistan. We started training our teams on blockchain in 2017. We did the first hackathon in blockchain in Pakistan for 100 individuals in 2017 and brought all that funding. वो भी हम बाहर से लाए. It was free for everybody. We brought that funding from outside. We collaborated with a few companies in Pakistan.
So that is also absolutely कि जो blockchain is very very up and coming. So it's a very emerging technology. But I wanted to go back to when you're talking about the 3 techs, because we also do a lot of judging on different panels. There's also one more tech that is very up and coming, which is agri-tech. Pakistan को जहन में रखते हुए, agriculture being the main focus for a lot of the bigger population, agri-tech is something that I have seen very up and coming. बहुत सारे startups ऐसे होते हैं जो agri-tech के around चल रहे होते हैं. So I think that is also something that you should definitely keep in mind. थैंक यू फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव आंसर और एडवोकेसी करने के लिए इंडस्ट्री की. यहाँ पे आई थिंक कम्युनिटी के लिए जो मेन आउटकम है वो यही है कि आई थिंक हमें क्या कहूँ कि एक हमारा एक बहुत अच्छा ग्रुप है जो कि हमें बहुत हद तक फ़ायदा भी देता है इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग में काफ़ी लोगों को इन करने के लिए. लेकिन अब काफ़ी बैंकर्स बन गए तो हमें इंडस्ट्रीज़ डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है. और अब जो है ना वो टेक्नोलॉजी की हमको अंदर आने की ज़रूरत है. एग्री टेक की बहुत अच्छी बात की, वाई नॉट जंप इनटू एग्रीकल्चर और एनी अदर इंडस्ट्री. मतलब बैंकिंग एक हद तक है, सेचुरेट भी हो गई है, बैंकिंग टेक आ रहा है, अब नियो बैंक्स आ रहे हैं, ये सब चीज़ें नए कॉन्सेप्ट्स हैं. तो शायद नए कॉन्सेप्ट्स की तरफ ज़्यादा बढ़ें और ये जो बैंकिंग का जो ओल्ड हमारा फैशन है कम्युनिटी अंडरस्टैंड कर रही होगी कि लोगों को भरोसा होता है कहीं ना गया तो यहाँ तो फिट होना है. तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि ये जो बी प्लान होता है ना तो ए प्लान कुछ भी नहीं होता. तो बी प्लान ना रखें और ए प्लान के अंदर परस्यू करें. आई थिंक इस पूरे टाइम के मैं समअप करता हूँ और ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे तमाम पैनलिस्ट का. और अब ऑडियंस से आई थिंक मेहदी 5 मिनट्स का Q&A 5 मिनट्स है. It's 5 to 10 minutes. If anyone's having any question with any of the panelists, so please raise your hand. तो मैं उनकी तरफ. I have a question that you people have told your stories about how you have developed. If a young person just coming up with an idea, what is coming in his mind, sometime what he will do, immediately he will go to his father or his parents or his friends. And immediately there is some people will say, oh, क्या बोल रहे हो यार, ये possible ही नहीं. But can you guide us, guide the young people if they are thinking something, so what is the way forward, how to go forward, to whom they should approach, or any flow chart, okay, this is possible, this is possible, this is not possible, some tips if you can give. भाई आप बता सकते हैं आप किन पैनलिस्ट से स्पेसिफिकली सवाल पूछना चाह रहे हैं या एनी ऑफ द. सो आई थिंक सबसे पहले तो कोई भी आइडिया के ऊपर जैसे सिब्तैन ने बोला कि ये सिर्फ नहीं समझे कि ये प्रॉब्लम आपका है. आई थिंक आइडिया को वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी होता है. मैंने भी किया. सो जस्ट टू सॉर्ट ऑफ गिव एन आइडिया, हमने किया ये कि हमें ये देखना था कि क्या लोग जो है वो डिजिटली एडवांसेस रिक्वेस्ट करेंगे. तो हमने जो है वो एक छोटा सा एक कंपनी से बात करी, एक छोटा सा 500,000 रुपये का पैम्फलेट प्रिंट किया और उनकी कैफेटेरिया में जाके लगा दिया कि अगर आपको अपनी तनख्वाह चाहिए एडवांस में तो इस नंबर पे मैसेज करें, अपना एम्प्लॉय नंबर और CNIC नंबर. सो आइडिया ये है कि सबसे पहले तो आइडिया को वैलिडेट कर लें टू सी के उस आइडिया की क्या बोलते हैं, इफ़ यू आर थिंकिंग दैट दिस इज़ अ प्रॉब्लम, इज़ इट जेन्युइनली अ प्रॉब्लम और नॉट. सबसे पहली चीज़ ये है. वंस दैट्स डन, उसके बाद फिर जो है वो आप अपना आइडिया के बारे में मैं थोड़ा सा फॉर्मल रूट की बात कर रहा हूँ. अगेन सिब्तैन ने फ्रेंड्स एंड फैमिली की बात की. जो है वो आई एम नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड्स. आई एम मोर कि भाई अगर करना है तो उस तरीके से करो जिस तरह से जो है वो दुनिया में ये चीज़ होती है उस तरह से की जाए. अपॉर्चुनिटीज़ अब पाकिस्तान में है. सो आप अपना एक छोटा सा जो है वो प्रेजेंटेशन बनाएं अबाउट द आइडिया एंड यू कुड गो टू वन ऑफ दीज इंक्यूबेशन सेंटर्स एज वेल. वहाँ पर जाकर रीच आउट करें. बहुत सारे मेंटर्स और एंजल इन्वेस्टर्स हैं जो अवेलेबल हैं. अगर आप इंटरनेशनली बात करते हैं तो कुछ एंजल नेटवर्क्स हैं ऑनलाइन जिनको जहाँ पर आप अपने आइडिया को फ्लोट कर सकते हैं और वहाँ पर जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो आपको रीच आउट कर सकते हैं. या फिर जो है वो अगेन community members like ourselves जिन्होंने थोड़ा सा we are slightly ahead of anybody else in the journey, reach out to us. मैं LinkedIn पे हूँ, अली लधुभाई के नाम से, reach out to me and we are happy to connect anyone to the general investor community that is looking to invest in new and innovative ideas in Pakistan.
उसके बेसिस पे फिर आप जो है वो प्रोटोटाइपिंग के अंदर भी जा सकते हैं। आई थिंक मेरा जो है वो अप्रोच इसके अंदर यही है कि बिकॉज यू हैव टू पुट इन द एफर्ट एंड यू नीड टू गेट पेड फॉर द एफर्ट। द आइडिया इज़ कि आप जो है वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके आइडिया के ऊपर पैसे लगाने के लिए तैयार हो सकते हैं, तो उनकी फंडिंग को यूटिलाइज़ करके और फिर आइडिया को फॉरवर्ड करें एज अपोज टू बूटस्ट्रैपिंग इट एंड सो फॉर्थ। सो मेरा अपना जो है वो इसके ऊपर पर्सनल ये पर्सपेक्टिव है। सो दैट्स सॉर्ट ऑफ इन अ नटशेल। आई जस्ट वांट टू ऐड टू दैट कि वो जितनी भी बातें इन्होंने कही हैं बिल्कुल ठीक है, दैट्स द प्रोसेस, बट द फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू नीड टू स्टेप अप योरसेल्फ। जो आपने बड़ी मज़े की बात की थी कि वो फैमिली को कौन समझाएगा, अब्बा को कौन समझाएगा, दैट्स योर जॉब। यू नीड टू स्टेप अप एंड व्हेन एवर यू डू हैव एन आइडिया, आप दो बोट्स में सवार नहीं हो सकते। आप कहें कि मैं जॉब भी करता रहूँ, मैं आइडिया को भी फ्लोट करता रहूँ, आइडिया मेरा जो है वो कैसे, सो यू नीड टू टेक दैट रिस्क। Like I said very initially, an entrepreneur has to know how to take risks and should be ready for it, and he or she can fail, right? You can absolutely fail. And then जो दूसरी बात हम बार बार कह रहे हैं, network, mentors, Facebook से हट के भाई LinkedIn पे आओ, use that. That's better, right? I mean, we are all there. We are not on Facebook. You won't find us on Insta. You will find us on Twitter. You will find us on LinkedIn. And we are out there. I mean, people reach out to us every day. 2 या 3 तो रोज़ाना आती ही हैं कि जी हमें गाइड कर दें, हमें बता दें। स्टूडेंट्स ही होते हैं, आपके जैसे होते हैं, कम्युनिटी से बहुत कम आते हैं, which is a shame, right? आना चाहिए, which is why we are here today to tell you that we are here. You should ask us, okay? सॉरी, मैं थोड़ा सा भी, सबने बोल दिया था, मैं भी बोल देता हूँ। मैं शमीम की बात से थोड़ा सा वो डिसएग्री भी कर सकता हूँ, ऐड भी करूँगा। मैंने 1.5 साल जो है वो जॉब के साथ अपना स्टार्टअप चलाया है, और जॉब मैंने फुल टाइम नहीं कर रहा था। आई एक्चुअली मूव टू अ रिमोट रोल, कहीं से बैठ के कर सकता था, बिकॉज आई वाज एक्सपीरियंस, मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस था, तो मैं उसी कंपनी के साथ रिमोटली काम कर रहा था। आई डिडंट हैव टू बी इन दैट ऑफिस, सो आई कुड मैनेज बोथ द थिंग्स। ऑब्वियसली इट्स नॉट ईजी, नॉट एट ऑल। इट नीड्स फॉर यू टू हैव सम रेपुटेशन इन द मार्केट, कि आपको एज अ एम्प्लॉयर कोई अपॉर्चुनिटी दे कि हाँ चलो यार दोनों चीज़ें कर लो, हमारा भी काम कर लो और उनका भी कर लो, जो भी करना है। सो फर्स्ट थिंग, आई थिंक मिस शमीम ने बिल्कुल सही कहा, यू हैव टू स्टेप अप, दिस इज़ योर थिंग, नोबडी कैन कन्विंस एनीवन। आपको कुछ करना होता है, आपको अगर पढ़ाई करनी है, कुछ करना है, बाहर जाना है पढ़ने के लिए, कुछ भी जाना है, मूव आउट करना है, तो आप अपने पेरेंट्स से खुद ही बात करते हैं ना, कोई और तो आके बात नहीं करेगा। सो देयर इज़ नो फ्लो चार्ट, देयर इज़ नो straight answer to this. I think you just need to take baby steps and keep validating each whatever idea you're doing. Keep on doing it, and try. If you have experience, if you can do what I did, possibly there is a possible to do both the things at the same time. Just want to add to what Sibtain is saying, and that gave me another thought in my head. And I think हम लोग का जो सवाल का आंसर है, बहुत सारे सवालों का जवाब एक साथ दे देगा. But let me tell you that कि he's absolutely right. कि आपने जो है आइडिया को वैलिडेट करने के लिए ऐसा नहीं है कि अगर मैंने आपसे कहा कि यार एक चीज़ चूज़ कर लो तो आपने जॉब छोड़ी वो, बट व्हेन यू रियली वांट टू गेट स्टार्टेड देन यू हैव टू चूज़ वन। एक बात ठीक है, दैट्स व्हाट ही डिड आल्सो, राइट? आफ्टर व्हेन ही हैड वैलिडेटेड द आइडिया ही चोज वन। एक और चीज़ जो मैंने बहुत देखी है स्टार्टअप्स में, एंड आई हैव ऑलवेज हैड अ प्रॉब्लम विद दैट, ही माइट अगेन डिसएग्री टू दैट, अली माइट डिसएग्री टू दैट एज वेल, इज़ दैट जब आप अपना स्टार्टअप करते हैं तो यू शुड हैव दैट एटलीस्ट 5 to 8 years ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, ग्रिलिंग योर सेल्फ इन दैट एक्सपीरियंस टू लर्न कि पूरा लाइफ साइकिल क्या है। हम अपनी टर्म्स में कहते हैं जी पूरा SDLC क्या है, इन टेक्नोलॉजी टर्म्स भी से दैट कि जी पूरा चलता कैसे है। ऐसा नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी से निकल के आपने कहा जी बस ये आइडिया है, मैंने ये करना है। आई फील दैट पीपल हु हैव बीन इन द कॉर्पोरेट फॉर एटलीस्ट अ डेकेड इफ़ नॉट मोर, वो जब स्टार्टअप्स करते हैं ना तो उस पर VC का ट्रस्ट भी होता है, उस पर लोग फंड भी करते हैं। वो कहते हैं यार ये एक्सपीरियंस से आ रहा है बंदा, कंपेयर टू समबडी हु इज़ जस्ट फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज। सो दैट इज़ और वो स्टार्टअप्स सक्सीड भी करते हैं क्योंकि उनको नॉट जस्ट कि उनको एक्सपीरियंस होता है, उनको ये भी आता है कि जी परसिवियर कैसे किया जाता है, पसीना कैसे बहाया जाता है, उनको पता होता है ये। ठीक है, अच्छा मैडम शमीम के साथ मैं 100% एग्री करूँगा। अनटिल यू हैव नॉट सीन द रियल वर्ल्ड, सिर्फ एक ख्याली पुलाव बना के डोंट जंप इनटू इट।
आई थिंक कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेरी अगर पर्सनल लेवल पे बात करूँ, जो है वो विदाउट द बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट आई हैड मैं नहीं पहुंच सकता था जहां पर. एंड फॉर्चुनेटली पिछले साल में जितने भी स्टार्टअप्स ने पैसे रेस किए हैं, अगर जो है वो VCs के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें, दोज हु हैव रेस्ड द मोस्ट मनी आर पीपल हु हैड कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस. करीम के अंदर काम कर चुके हैं, एयरलिफ्ट के अंदर काम कर चुके हैं, रिटेलों के अंदर काम कर चुके हैं. तो जिस भी सेक्टर के अंदर आप काम करने जा रहे हो, बिकॉज रियली जब तक आप बाहर से देख रहे होते हो, आपको वो कहते हैं ना, यू वोंट नो हाउ डीप इट इज़ until you actually put your foot into it. So definitely, 100% agree with you. Okay, Mesum, we have another question here. Assalamu alaikum everyone. My name is Ali Raza, and I'm okay. Sorry. My name is Ali Raza. I'm from a software house called Tailverse, and basically I'm also the yeah. Okay, and I also represent Najafia Foundation. I'm the marketing head of that Iraqi-based NGO. Sorry. Okay, my question is basically. कोई मसला नहीं, आप थोड़ा ज़ोर से बोल दो. Okay, मेरा question basically. Seems like a paid consultancy. नहीं, इसका बहुत ही शॉर्ट आंसर है, बहुत ही सिंपल इसका आंसर है कि आप फूड पांडा में जाके पहले 1 साल नौकरी करें. मजाक नहीं कर रहा मैं आपसे, बहुत, मैं आपको स्ट्रेट आंसर है इसका. कोई इसका आंसर नहीं है कि इससे ज़्यादा इतने का पड़ेगा, कैपिटल कॉस्ट इतनी है कि आप जाए और उसमें नौकरी करने के लिए कुछ भी करें, बट गेट अ जॉब देयर इन अ डिपार्टमेंट, मोस्ट लाइकली फाइनेंस के करीब कोई ऐसी चीज़ हो, अकाउंट मैनेजमेंट, फाइनेंस, वेंडर मैनेजमेंट, वहाँ पे जाए और सारी आपका काम नौकरी करके उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करना है, लेकिन सीखना है. और वो सीख के ये सारे सवाल के जवाब आपके पास खुद ही आ जाएंगे. कोई मैं नहीं सिखा सकता, कोई अली भाई नहीं बता सकते, मैं शमीम नहीं बता सकती. ये काम देखिए जो आप करने जा रहे हैं, सवाल इसके बहुत सारे फॉलोअप है. क्यों करना है, क्या ज़रूरत है, फूड पांडा कर रहा है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपकी ऐसी क्या डिफ्रेंशिएशन है. मैं इतने सवाल पूछूंगा कि आप वहीं पे आइडिया बंद कर दोगे. ठीक है ना. तो मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप करो जो भी, अगर आपका रीज़न है जिसकी वजह से आप कर रहे हो, कोई भी आपका डिफ्रेंशिएटर है जिसकी वजह से आप करना चाह रहे हो, तो पहले उस इंडस्ट्री में जाओ. 1 साल कम से कम लगाओ. 1 साल में वैसे कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन 1 साल तो लगाओ. उसके बाद या तो ये समझ में आ जाएगा कि फूड पांडा में काम करना है या टेलवर्स वापस जाना है या फिर अपना स्टार्टअप करना है. सो खुद ही आंसर मिल जाएगा इसका. मैं आपको बता दूं, सॉरी, आई डोंट थिंक एनीवन हैज Very well answered, Sibtain. We have another question here. अस्सलाम वालेकुम. मेरा सवाल एक बहुत सिंपल सा है. अभी हमने रिसेंटली देखा वावा कार्स बंद हो गया पाकिस्तान में, इसके बाद एयरलिफ्ट कम्प्लीटली शट डाउन हो गया. तो इसकी वजह से एक स्टार्टअप कल्चर में मतलब एक जो है वो हमें देखने में आ रहा है कि अब लोग डर रहे हैं. पहले ये था कि मैंने लोगों को खुद देखा है कि लोग
डबल सैलरी मिल रही है, एयरलिफ्ट जा रहे हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ों के बाद उन्होंने 3 राउंड्स रेस किए, अच्छे खासे, मतलब बिल्कुल वेल सेटल चल रही थी। जानने वाली भी थे कंपनी में, वो कह रहे थे यार कुछ भी, मतलब ऐसा होता है ना, सैलरी देना रोक दिया इस तरह का कुछ। अब अचानक से जब ये आया, अब इसमें टीम्स बिल्ड करना स्टार्टअप्स के लिए, क्योंकि अब लोग से डर रहे हैं कि यार स्टार्टअप्स में जाएंगे, बंद हो गई, तो ऐसे सवालात भी आते हैं, तो टीम्स बिल्डअप करना मुश्किल हो रही है। तो इस चैलेंज को कैसे फेस करें? अरे मेरा तो स्टार्टअप है नहीं, मैं आपको ये जो फेज़ से पिछले वाला फेज़ बताती हूँ, ठीक है। उस वक्त भी हमने सर्वाइव किया था ना, मतलब we run a very so we run companies, we build software for the companies, so we have a very established business, and a lot of software houses that have established business. So before the startup ecosystem came in, हमें resources बड़े आराम से मिल जाते थे। तो startup ecosystem आया तो उसने तो तबाहियाँ मचा दी हमारे लिए, ठीक। But we pivoted, right, and we survived, right? So I'm sure that देखें, जब भी कोई नया सेटअप आएगा, कोई नई चीज़ आएगी, it will take time to settle down. So अभी जो लोग एकदम घबरा गए हैं एयरलिफ्ट से, इससे उससे, these things will happen. That it's not inevitable. You just cannot avoid it. It will happen, and then things will settle down. So ठीक है, लोगों का ये फेयर बिल्कुल ठीक है कि जी स्टार्टअप में जाएंगे, अब बंद हो गई तो लेकिन आप देखें ना कि जो स्टैब्लिश कंपनीज थी वो ये कहती कि यार मैंने इस बंदे को हायर किया 1.5 लाख में, वो 3 लाख रुपए स्टार्टअप उठा के ले गया, अब मैं बंदा कहाँ से लाऊं, बंद कर दूं? ऐसे तो नहीं होता, राइट? एंड कंपनीज हैव क्लोज्ड डाउन, but companies have also figured out a way out of it, right? Upskilling and reskilling of their existing employees and skilling up of fresh graduates कि जी और मार्केट में लोग लेके आएँ, go to tier 2, tier 3 cities, skilling up करें और upskilling भी करें existing employees की। तो ये it's a mindset, और ये जो अभी आप बता रहे हैं बहुत fresh है, it's just happened. So we'll have to see, and then obviously recession है 2023 के बाद, once that gets over, तो things are going to go back to normal, it's going to bounce back. और जब भी मार्केट में कोई नई चीज़ आती है वो थोड़ा सा एक सेटबैक होता है, and then it bounces back better than before, and we have seen that, right? And it is going to bounce back. But I will let the people who are raising funds and having startups answer that, more of that. Thank you, Ms. Shamim. I would like to hear. Okay, my bad. I think Khizar का जो सवाल है वो Khizar is one of the guys who I've mentored. He's one of those guys out of this all of one who actually approached me on LinkedIn and reached out. And these guys are doing their startup. They've been in touch with me for the last 1.5 years. So great guys. I think navigate करना है इस time को, कोई obviously देखिए, I think Ms. Shamim has pointed out very correctly, upskilling करे, experience resource नहीं मिल रहा, ज़रूरी नहीं है अभी, things are not moving fast. So अगर आपका product की एक deadline थी कि यार मैंने ये 3 महीने में निकालनी है, तो अब आप वो थोड़ा सा delay भी कर देंगे junior resource hire करके, तो मसला नहीं है, because things are slowing down. Your acquisition will slow down, your customer expectation is changing, your buying power is changing. So अगर वो सब change हो रहा है तो फिर आप अपने आप को उसी हिसाब से remodel करें, and don't go for experience resources, और अपने जैसे देखिए आप हमारे लिए छोड़ दें आपकी दफ़ा आप लोग। दूसरे ये कि आप देखिए, hiring is one of the biggest challenges any company faces in their early stages. Even if people who have money, ask, I think Ali, even with money it's not even easy to hire, right? So the challenge has always been there. I think it's all about finding the right talent. अपने आप को जो vision है ना, जब रिक्रूटमेंट कर रहे हो तो हमें लगता है कि हम सामने वाले को हायर कर रहे हैं, मार्केट बहुत बदल गई है, अब बताना पड़ता है कि हमारी कंपनी में ऐसा क्या है कि आप हमारे पास आके काम करें, ठीक है ना? सो आई थिंक इट्स टाइम टू ब्रांड योर सेल्फ एंड स्टैंड आउट व्हाई दे शुड जॉइन दिस जर्नी एंड व्हाई देयर इज अ पर्पस बिहाइंड इट एंड व्हाई यू गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट बिग थिंग इन दिस कंट्री, राइट? सो अपने आप को ज़रा रिवैम्प करें और उन चीज़ों को ख्याल रखें जो कि आपको चैलेंजेस आ रहे। देयर इज़ नो मैजिक पिल फॉर सॉल्विंग दिस। Thank you, Sibtain. I would like to hear something from our female participants here. If anyone of you have any question with any of the panelists, so please. No one here? Okay. Okay, please. I mean, if someone else wants to ask. So she can ask. I think one of the main things that I've heard throughout is किस तरह से
प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, आपने 4 दफ़ा पिवट किया, we started with something, it ended up being something else. How do you make sure that you keep the bias out of the door when you're going towards any problem that you want to solve? मुझे पता है अब हर चीज़ का solution app बनानी है. I know I have a problem, the solution is app for some reason. So how do you navigate towards that? How do you don't fall in love with the solution that you're creating versus actually giving value to the end customer? नहीं, आई थिंक मेरे हिसाब से तो एक इसका बड़ा सिंपल आंसर है, स्पीक टू द कस्टमर. कस्टमर खुद बताएगा कहाँ जाना है. बिजनेस खुद अपना राउट लेता है. 6 महीने 6 months in you will know where the business is going, and also when you speak to your customer. And मैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ जो है वो I have had the opportunity to actually you know listen to and be part of like an exchange program with some of the largest businesses in the world. मैं अगर नाम लूँगा तो शायद आप पहचान जाओगे. बॉक्स हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, Airbnb हो गया. एंड उन सब के पास से, मैं ये अपने पास से नहीं बोल रहा, एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस एज वेल, बट सब लोगों का जो फोकस है वो इसी बात पे होता है कि फोकस ऑन द कस्टमर, टॉक टू योर कस्टमर. बड़ी बड़ी कंपनीज़ के CEOs आज भी जो है वो मिस्ट्री शॉपिंग करते हैं, अपने कस्टमर्स को फ़ोन करते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट couple of $1 billion कंपनीज. रैंडमली किसी को फ़ोन करेंगे, पोजिंग टू बी somebody else but from that company and taking feedback. जब तक आप फीडबैक लूप को अपने पास रखोगे, you will always keep pivoting in the right direction. And I think I'd like to actually hear Sibtain speak on this, because मैंने भी वही काम अटैम्प्ट किया था जो Sibtain ने किया. तो ये तो मेरे आगे निकल गया. तो ये बल्ले बोलता ज़रूर है कि मैंने पैसे ज़्यादा रेस कर लिए, बट he persevered in a space that I let go of. So you know, Sibtain, if you could. Ali and me were competition at one time. नहीं, I'm not joking. ये कर लो compare. नहीं वो अपनी जगह पे, वो अपना गुजराती अपने खोजे अपनी जगह पर. लेकिन I think speaking to customer is definitely I think ego है. I think मसला ego है. Because we are so married to the idea, वो हमें लगता है कि यार हमने, और दूसरा एम्बेरसमेंट है. हम किसी को बोले यार मैंने इधर से स्टार्ट किया, नहीं आज मैं ये कर रहा हूँ. बोले यार तू कभी डिसाइड भी कर लिया करना क्या है, मतलब कल कह रहा है ये कर रहा है, आज कह रहा है ये कर रहा है, घर वालों को क्या समझाऊंगा, बेगम क्या बताऊंगा, दोस्त को क्या बोलूँगा. बोले यार अच्छा तो नौकरी कर रहा था, अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, अब ये तू आइडिया आज कभी सोचता है, कल कुछ और सोचता है, फिर उसके बाद बोलता है ये कर लूँ. सो आई थिंक वी फियर, द डर है. आप कस्टमर से बात भी कर लें फिर भी डर आता है, यार वो ये तो एक कस्टमर ने बोला है, अच्छा ये 10 कस्टमर ने बोला है, लेकिन मुझे तो वो 4 लोग ये कह रहे थे कि यार ये ज़्यादा अच्छा आइडिया तू कर रहा है यार. सो आई थिंक वो ईगो जब हम अपनी मारते हैं, एंड वी हैव दैट सेल्फ रियलाइजेशन कि व्हाट आर वी बिल्डिंग, एंड फॉरगेट अबाउट द एम्बैरेसमेंट, फॉरगेट अबाउट व्हाट पीपल आर गोइंग टू थिंक. And that is what kept me going, because I failed multiple times in figuring it out, the space that I was in. And every time I would have to give a different story to investors, to people who know. आज क्या कर रहा है यार, like you guys know, like we have हमारे पोस्टर पे लिखा हुआ smart benefits, but I only started smart benefits 4 months back. I was doing smart choice for the last 6 years. So and I'm still doing that. That is on the side, but now we have pivoted to smart benefits, which is more towards SMEs. So and now अब मुझे नहीं फ़र्क पड़ता. अब ये भी फेल हो जाएगा तो बोलूँगा ठीक है, कोई मसला नहीं है. This is how it was meant to be, right? And because I was speaking to one of the mentors, one of my mentors. You always need mentors. I can tell you this much. Find a mentor. He will show you a real picture. वो तुम्हें आईना दिखा देगा. And this guy was showing me a mirror, because when I was telling him that ये हमें challenge है, हम लोग इसमें grow कर रहे हैं, इसमें नहीं कर रहे, फलाना कर रहे हैं. This guy was listening to me, and then he was showing me, देखो तुम ये कह रहे हो, is this what is happening? I think ये सारी चीज़ें. So have a mentor who can give you a good picture of what you're building, where you're heading, what does it look like. So mentor, kill your ego, let go your fear. I think these 3 things would allow you to keep on understanding your problem, the customer better and better, and moving to the right direction. Yeah.
I think it also depends on what stage of your startup is in. That is also very, very important, right? So like both of them said, idea validation from customer is very, very important. But one of the things that we have noticed with very, very young startups, जैसे अभी आपने बात की, उन्होंने भी बात की थी, which is why I want to make sure that I bring it up. App is not the end of the solution. App is just a very little tech enablement. हमें हमारे ज़हन में होता है कि जी ये idea है, इसकी app बना लेते हैं, ये idea है, इसकी app बना लेते हैं. One of the things that we always check as judges on any startup competition इसके आपकी टीम स्ट्रेंथ क्या है, आपकी टीम में कितनी क्रिएटिविटी है, आप जिस आइडिया को लेके आए हैं, जिस इंडस्ट्री का वो आइडिया है, उसमें आपने कितना काम किया है. ठीक है, सो हम जो 4 लोगों की 3 लोगों की जो टीम होते हैं, हम पूछते हैं कि अच्छा किसका क्या बैकग्राउंड है, बिकॉज अगेन एट द एंड ऑफ द डे डाइवर्सिटी ऑन द टेबल इज़ सो इम्पॉर्टेंट. अगर आप एडटेक का आइडिया लेके आते हो, आप कहते हो मैं कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट हूँ, ये भी कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट है, तो फर्स्ट क्वेश्चन वी आस्क यू इज़ कि आपको एडटेक में क्या एक्सपीरियंस है, करिकुलम डेवलपमेंट का, कंटेंट बिल्डिंग का, स्ट्रैटेजीज़ का आपको क्या आइडिया है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सही है. और तीसरी बात जो Sibtain said, mentorship. I think for newer startups, when you have the validation and when you have actually spent from your pocket, bootstrapping the idea and brought up something, then incubate somewhere. तो ये जब mentoring और ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी. इवन जो आप बात कर रहे थे कि जी क्या प्राइसिंग होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, 3 साल का क्या प्लान होना चाहिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मेंटोर समझाता है और वहाँ पे दूसरे स्टार्टअप्स होते हैं. सो दैट एनवायरनमेंट बेसिकली matures you, it builds you. So you should definitely validate your idea, have a good team. सही है, जैसे इसने बात की, I'm not going to go back, ego bias, absolutely. And then incubate yourself somewhere to get everything else around that. ओके, सो आई थिंक इसमें मेन चीज़ ये है कि काफ़ी लोगों के सवालात ये सेंट्रिक थे कि ऐप बन जाए. ऐप जो है ना वो फाइनल चीज़ है. ऐप कुछ भी नहीं है. मतलब ऐप बना ली, एक हफ्ता आपको बड़ी खुशी होगी उसको देखे, नेक्स्ट वीक क्या करोगे. सो ऐप इज़ अ मीन्स टू एन एंड इन इट सेल्फ जो है ना वो आपका पर्पज़ है. तो वहाँ पे मैं सब्तैन की बात को कहूँगा कि कॉज और पर्पज़ जो है ना वो मेन चीज़ है. अगर आप फूड पांडा के सीईओ से पूछोगे ना आपने कब स्टार्ट किया था, तो उसने ईट ओए से स्टार्ट किया था. फूड पांडा वो कुछ भी नहीं था, तो उसके पास भी एक पर्पज़ था. फिर फूड पांडा ने भी अपने आप को काफ़ी दफ़ा रीइनोवेट किया और अब वो क्लाउड किचन लेकर आया, वो सब चीज़ें की. सो अगेन वो आपके पास पर्पज़ होना चाहिए मेन चीज़. ऐप तो बहुत आसान चीज़ है. आई थिंक मेरे मेल बॉक्स में बहुत सारे स्पैम आते हैं, उसमें से एक मैंने ये भी पढ़ा था कि $150 में करीम का क्लोन खरीद लो विद टेक्स्ट आर्किटेक्चर AWS पे, तो कोई मसला नहीं है. एंड कभी कभी ऐसा भी होता है, वंस यू वैलिडेट योर आइडिया, यू डोंट इवन नीड एन ऐप. सो one of the things that I just noticed like a couple of weeks ago, हम एक startup हमेशा when you go to a judging event, you're saying कि अच्छा इसमें ऐप तो होगी कहीं ना कहीं तो tech enablement होगी. But when they actually understood their audience was actually not the urban population but it was the rural population. अब क्या करेंगे आप ऐप का? Now you have to think out of the box and say कि अच्छा हम उनको कैसे on board करेंगे, right? And that is I think one of the biggest problems that Fintech has, onboarding people from rural areas, bringing them on plastic money. उसके लिए जो जितनी ज़्यादा मेहनत वो लोग कर रहे हैं. So similarly it depends कि क्या टेक enable करना ज़रूरी है भी कि नहीं, right? Listening to your valuable insights, मैं सोच रहा हूँ कि हमारे पास शार्क टैंक पाकिस्तान भी होना चाहिए. Okay, participants, due to time constraint, हम जो है वो लास्ट सवाल लेंगे. आप फिक्र ना करें, ये जितने पैनलिस्ट हैं वो कहीं नहीं जाने वाले. इनको रोकने के लिए हमने रिफ्रेशमेंट्स का इंतज़ाम कर रखा है. सो डेफिनेटली इसके बाद नेटवर्किंग का सेशन भी होगा, तो यू कैन ईजीली कैच अप विद देम. आई होप आप लोग हैं मौजूद हमारे साथ. सो लास्ट क्वेश्चन. बेसिकली थैंक यू नोट है मिस शमीम के लिए कि इन्होंने जो कोड गर्ल्स का आपने ओपन किया है और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अपनी शादी की ज़िंदगी के बाद एक पॉज आता है, फिर हम खड़े होते सोचते क्या करें. तो आपने जो गेट ओपन किया था कोड गर्ल्स का हमारे लिए, तो बेसिकली वहाँ से IT की मैंने एजुकेशन ली और नाउ आई एम लर्निंग. कैटरपिलर्स भी एक उससे भी मैंने किया. तो मैं चाहती हूँ जमात भी ऐसी कोई IT की अपने यहाँ पे भी हमारे लिए मेंटोर्स प्रोवाइड करे और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप लड़कियों को सिखाएं, जैसे मैं इन हो सकी और जैसे मैं अपवर्क फाइवर पर वर्क कर सकती हूँ, तो दूसरे लोगों के लिए भी ऐसा एक गेट ओपन किया जाए. थैंक यू. Now it's a public demand. Thank you very much, Ms. Shamim. Just
an addition, I would like to know about Code Girls because I have seen the post and मेरे सामने जो है वो काफ़ी जो है वो लोग पोस्ट डाल रहे होते हैं and I am unaware of it कि exactly क्या आपका ये startup है या क्या ये आप लोग आपने शुरुआत किस तरह की? It's not a startup. It's basically a passion, a project that I do as a side gig. उसमें हमने what we've done is girls aged 18 onwards who would like to make some who would like to enter the technology domain. हम उनके लिए एक program लेके आए. Again, like we said, everything has a problem set, right? The biggest problem set was कि जो है मुझे ऐसा कोई जो है वो नहीं पता इंडस्ट्री के जिसमें घर बैठ के आप पैसे कमा सकते हैं. I think tech is the only one. Being in the IT industry, the biggest problem that we had back in 2018, my company's diversity ratio was below 10% with gender diversity ratio. Me being one of the co-founders, मेरी कंपनी में भी ख़वातीन नहीं आती थी, वो below 10% होता था. और फिर होता ये था कि जो प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते थे वो उसमें वो एक मिसिंग एलिमेंट होता था जो कि डाइवर्सिटी हैज़ टू बी ऑन द टेबल टू ब्रिंग आउट दोज क्रिएटिव जूसेस का आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो आप 50% ऑफ द ऑडियंस के लिए तो नहीं बना रहे, वो तो आप सब के लिए बना रहे हैं. तो अगर 8.6% ऑफ द ऑडियंस इज़ नॉट देयर, then how do you build a product that everybody can use, right? So that was the other problem. तो हमने जो है वो कोशिश ये की उस ज़माने में कि जो प्रोग्राम्स ऑलरेडी चल रहे थे हमने उनको रीच आउट किया कि लेट अस हेल्प यू बिकॉज वी सो रीच आउट एज इन हेल्प यू एज इन बिकॉज वी आर द इंडस्ट्री, वी नो एग्जैक्टली व्हाट वी वांट. यू आर टीचिंग बट यू आर नॉट ब्रिंगिंग द आउटकम दैट द इंडस्ट्री नीड्स, टू लेट अस हेल्प यू. उसमें हमें कोई बहुत ज़्यादा खातिर हुआ नहीं मिला. तो देन we started doing this ourselves. We bootstrapped. We have funders in the US, in Pakistan also now. We have over 100 friends of Code Girls who sponsor the program. हम 18 साल या उससे बड़ी लड़की ख़वातीन उससे बड़ी जिस भी एज की हो, we train them in technology. We have different phases. The first phase basically is just a dip into the pool कि आप देखें कि आपको अच्छा भी लगता है या नहीं. So the first phase is HTML, CSS, JavaScript, jQuery. वो जब ये 4 महीने कर लेती हैं and then towards the end we give them a project. हम बड़ा lean style में उनको जो है वो project भी देते हैं, team building भी करते हैं, soft skills भी सिखाते हैं, entrepreneurship, financial literacy, solopreneurship, learning about what is harassment, what are the laws of Pakistan, understand what workplace safety is. All that is baked into this program. ये हम उनको 4 महीने में सिखाते हैं along with an agile mindset. 4 महीने के बाद she is either ready to leave the program कि जी ये this is not my piece of cake, or she is ready to go to the next stage कि जी मैंने phase 2 करना है, or she is ready to enter the market. There have been girls who have been ready after phase 1 to enter the market, right? तो उसके बाद phase 2 में they can select between any advanced phase, and we keep changing that. We also keep pivoting, learning from what we need as the industry, right? So अभी जो आजकल मैं आपको बताती हूँ जो पहले हम कर रहे थे वो different थे, आजकल हम कर रहे हैं we're doing MERN, we're doing Salesforce, we're doing Microsoft Dynamics CRM, we are doing Flutter. और पहले हम कुछ और कर रहे होते थे, अब हम ये 4 या 5 ट्रैक्स पे हम काम कर रहे हैं. यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन, उसमें से जो भी वो चूज़ करना चाहे उसमें से वो चूज़ करते हैं, एंड देन दे कैन डू द नेक्स्ट फेज. दिस कोर्स इज़ 100% फ्री फॉर द गर्ल्स बिकॉज वी हैव स्पॉन्सर्स हु स्पॉन्सर फॉर द कोर्स. दे ओनली पे ए ऑनबोर्डिंग रजिस्ट्रेशन फी, एंड इसके इंसेंटिव्स ये हैं कि एट द एंड ऑफ द कोर्स we have a job board, and we have a very, very active job board. So our girls go into systems, Temples, Contour, Pasha, you name it, everywhere, right? Because we have involved the industry to do this. That's the recipe of success, because the industry is involved, the industry. Sada Pay comes in, does workshops at our place. So then they handpick कि अच्छा यार ये जो बच्चियाँ थीं इसमें से जो 2 बच्चियाँ थीं बड़ी बातें कर रही थी, ये बड़े अच्छे सवाल पूछे थे, we need their resumes. So that actually, so it's a win-win for everybody, right? For the industry and for us as well, for the girls as well. तो अब जो है what started as training has actually, we have been able to complete the wheel where these girls are actually getting jobs. So we have a job board and a very active job board, and I think so far we've been able to place in the last 4 years 200 girls into the industry. So that's the thank you so much, and that's the success story of the whole thing, and we hope that we are able to continue with that.
हाँ, ये मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, और ये जब मुझे कहते हैं तो मैं उनसे कहती हूँ आप so I can't do everything, people have to come forward, but there is a small element because Code Girls is not an institution. Code Girls is a project, is a program which is under Consulnet Corporation. Consulnet Corporation is something that we've been doing for the last 2 decades, जहाँ पे हम youth की training करते हैं. ये इसलिए बोल रहा है कि खुद उसकी पैदावार है, तो जो है जी, तो सो आप उस अच्छा फातिमा से 2001 or 2000 गुड सो व्हाटएवर वी डू हम लोग जो भी छोटा काम करते हैं, फातिमा तो खैर बहुत बड़ा काम करता है, हमने जो भी छोटा काम किया है उसमें ऑब्वियसली उसका बाय प्रोडक्ट हमेशा होता है, छोटा या बड़ा उसका इम्पैक्ट होता है. वी आर जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड अ बिगर इम्पैक्ट. हम इतनी मेहनत करते हैं तो इम्पैक्ट भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए. सो कंसल्टेंट में हम लड़कों की ट्रेनिंग्स भी कराते हैं, अभी भी हमारे पास हो रही है. वी जस्ट डोंट कॉल इट कोड बॉयज़, इट माइट जस्ट shoo them away, but we do have trainings for boys there as well. So yeah, we do that. Thank you very much, Ms. Shamim. With this, we conclude this Q&A session, and आप लोग सबसे again माज़रत जो आपने सवालात नहीं कर सके, and again just a reminder कि we will be having a networking session afterwards, so you can tap these panelists there as well. I would like you all to please remain seated here as we move to the next presenter of our program. Moving on to our next presenter, Ms. Narjis Habib. Ms. Narjis has done her master's from Carnegie Mellon University, I hope I am pronouncing the name sahi se, where she has mainly studied about artificial intelligence and machine learning. She did her bachelor's in electrical engineering from Habib University and worked there as a design associate as well. I would like to request you, ma'am, please to come up on stage and share your journey and valuable guidance in this aspect of innovation and entrepreneurship with this audience. Thank you. Well, I've done a couple of these before, लेकिन I think पहली दफ़ा इतने familiar faces के सामने, especially my parents, unke samne se I'm very happy to be here. Thank you so much, the panelists. I've learned a lot. There were a lot of things that I wanted to add on, but time constraints, what we have over here. Just to give a brief introduction of myself, I went to Carnegie Mellon. I did my master's in product and service innovation with the focus on artificial intelligence and machine learning. So a lot of what we're talking about here, agile mindset hai, failing fast, failing early, innovation, product management, that's all something that I do it on a regular basis. I think I'm here generally just to talk about my journey and why am I standing here. I wish there were more girls. Lekin, I think you were just mentioning that this is a lot more than what we've had previously, so I think I'm going to take that, and inshallah it's only way forward yahan se. But I mean, I myself, AC community, Soldier Bazaar, born and brought up. I went to AMS Anmutsa school for my metric. Wahan pe, I think it all started with education and exposure, what you've been talking about. I would really wanted to go to the YES program. Nahi hua uska. Next year, a few years later, I went to Summer Sisters. When I went into college, I went to Akhan over there. I think my mom always keeps on saying कि जितना कराची मुझे नर्जिस ने दिखाया है उतना किसी और ने नहीं दिखाया है, because I kept on taking her from places outside PSIAJ and Soldier Bazaar and Hyderabad, and I think it's always been a journey for not just me, for not just my family, but the people that I've always been surrounded with, and I think that's essentially what I'm here to talk about. I really wanted to target girls, so I think I am. So agar rest half of the room, if they feel left out, it's not on purpose. Please hop on the conversation. लेकिन कोड बॉयज़ क्यों नहीं है हमारे पास, क्योंकि बॉयज़ के पास और बहुत सारी opportunities हैं जो कि गर्ल्स के पास नहीं होती हैं. And it's not a level playing field. It's not that everyone has the same opportunities, but we hold on to what we're given, and that's what we go on forward with. So yeah, I ended up at Habib University doing my bachelor's in electrical engineering.
during that actually I realized that बचपन से ही innovation का शौक था, and I thought engineering might be the answer towards it कि अच्छा वहाँ पे बैठ के मैं कोई robot बनाऊँगी जिस पे innovation हो सके. But I realized that engineering mindset is very very stern. मैं वही solution बनाऊँगा जो मुझे पता है, ये robot मेरा वहीं से गुजरेगा जहाँ पे मुझे पता है इसे गुजारना है. I only have these components, इसकी वजह से मैं सिर्फ यही वाला काम करूँगा and not anything else. And that's when I credit a lot of what I've done so far to actually Habib University. Their curriculum, immensely great. So if we're talking about revamping our curriculum, वो भी तो partly our community related as well. So why not just use their resources and talent and mindset as well for curriculum revamp. I ended up actually really liking design, and while we all love using design thinking, it's a buzzword, but it's a lot more, and it has helped a lot more with that as well. I remember एक summer course था जिसमें एक CMU के alumna वो आए हुए थे to give a very short course on systems thinking, and that's what I did as an electrical engineering sophomore. Itna acha laga, not just because what they were teaching, but who was teaching and what mindset were they coming in from, keeping the bias out of their door, really talking to the customers, user research, and empathizing with the user, not just because it's the first step of design thinking, but actually that's something that's going to help you later on. I think he was very pivotal in making me familiarize with Carnegie Mellon, the work that they've done. And then if you go to CMU, you don't just do design, you end up doing tech or autonomous vehicle, and that's what I did as well. Between the few months, I think, मेरे undergrad और graduate education में, यहाँ पे हमारा mindset तो यही है कि graduate होंगे undergrad से, फिर एक bank में या FMCG में जाके management trainee program करेंगे, चाहे आप electrical engineering हो, चाहे आप CS हो, चाहे आप finance हो, whoever you are, you have to go to a bank, and that's what I did as well. But someone over there asked me, मैं क्यों गई थी bank? Because वही था करने को और क्या था, and मुझे उसी वक्त से design का शौक था, product की तरफ जाना था, digital products. Financial industry हमारी इतनी ज़्यादा booming, if it is so booming, then why not just hop onto that bus, right? Lekin someone over there once asked me, कि being a girl, having done my electrical engineering, and now interested in design and products, उन्होंने मुझसे पूछा था कि अच्छा आपने पहले वक्त ज़ाया किया था या आप अब वक्त ज़ाया कर रही हैं? And I think that was what really motivated me, कि ना मैंने पहले वक्त ज़ाया किया था, ना मैं अब कर रही हूँ, आप मुझे आगे 2 साल बाद देखेंगा. I quit that job, I went on to my master's program, and alhamdulillah, I think my secret recipe is coming back to the community and helping out in just like very minor ways that we can. I don't know, मैंने इतने सारे points बनाए थे लिखने के, बोलने के लिए, but I see the clock and we're running out of time. But to all the girls in this room, yes, you can do it. Perseverance, वो एक word है जो इन लोग ने सबने शायद बोला है, and I cannot put enough emphasis on how much you actually don't need to give up. ठीक है, शादी का सब बोलते हैं हो जाएगी टाइम पे, लेकिन if you like something else, try that as well before you commit to something else. And yeah, one thing, a few things that my family asked me to say it on the stage, lekin hijab has never been a barrier in how far you want to go, and it will never be it as well. So अगर आपको लगता है कि we're part of this community, हमारे लिए तो नहीं है, yes, आपके लिए भी है. And जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया, our community, अहलुल बैत, सब उन्हीं से तवस्सुल करके हम आगे जाएंगे. So we have a much greater, greener path that we need to explore. I think, yeah, that would be pretty much it from my side. If anyone, and not just girls, okay, anyone else as well, if there's anything that I can help you out with about education, bahar jana hai, finances kis tarah se karne, there was a community member that helped me out with my finances for the masters as well. So if there's anything that I can help you out with, feel free. LinkedIn, yes, you'll find me with name Narjis Zehra, and inshallah, see you all around.
Thank you very much, Narjis. Though your direct addressees were female participants, but I hope you have motivated me as well, and I'm sure that most of the male members here, obviously you can reach out to Narjis on her LinkedIn and after this program in the refreshment session as well. We are very ahead of time, so just to wrap up this session, I would like to invite Mr. President Abul Hassan Gokul Saab to have your concluding remarks as always, please. Any time limit? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Entrepreneurship is a burning passion with me, one of the favorite topics that I would speak about. That's because I was fortunate to be teaching this subject at IBA. And during the course of teaching, I realized that I'm teaching the wrong set of students. That's because those who aspire to come to IBA are those who are dreaming about joining multinationals as glorified managers, whereas entrepreneurship is something beyond that. And you cannot teach entrepreneurship. And you cannot teach, especially in 4 months, in one semester. So that raises the question as, what is entrepreneurship? Is it a process? Is it a state of mind? Is it a state of being? So if entrepreneurship is a mindset, what is the parallel mindset? That's the managerial mindset. So how does the businessman function? And how does the entrepreneur's mind function? So the businessman would check his pockets. अच्छा मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं इसमें क्या business कर सकता हूँ? The entrepreneur is not limited by that, never limited by numbers. He will say, this is what I want to do and this is what I will do. The entrepreneur is to the businessman what the child is to the adult. Perseverance. He'll never give up. Have you ever seen a child try to reach for a toy on a higher table than he can reach? He'll keep trying. But if you ever seen a child try to chase a kite जो कट के जा रही है, or to climb a tree and reach that kite जो वहाँ फंस गई है, the risk taking. Except obviously with age the risk taking becomes prudent. So entrepreneurship is, we don't ask a guy, why don't you become an entrepreneur? No. It evolves. It's the way you think. The risk taking is there, but it's more prudent. Entrepreneurs are very possessive about their time. And they think out of the box. They'll come up with newer and newer methods of doing things, of running business, of raising funds. And one thing, I've been given 5 minutes and it's an extempore speech, I was not prepared for it. Entrepreneurs will try to reach the sky, and most of them do. Most successful entrepreneurs are immigrants because it was the risk that led them to migrate, come to another land, and they could sustain or survive better. It's about survival. So eventually, those with the right mindset, the spirit to struggle and the spirit to survive, will eventually make it as panelists to some other programs. But eventually, it all adds up to the statement she just said,
my recipe for success was to come back and give to the community. Remember, the payback should never end. Thank you. Thank you very much, President Saab. Once again, I thank you all for taking out time from your valuable schedule. For presenting the souvenirs, I would like to invite, again, आपको ज़हमत देनी पड़ेगी, Mr. President साहब, क्या आप आएँ, please, and to present the souvenir to Ma'am Shamim Rajani, please. Thank you very much, President Saab. Would like to invite Mr. Ali Naki Taki, a community philanthropist, former managing committee member and former secretary of Education Board of Jamaat as well. Sir, please, I would like to request you to please present the souvenir to our moderator of today's session, Mr. Mesum Raza Hemani. I would like to request General Secretary of our Khoja Jamaat, Agazgar Shaidi Saab, to come up on stage. And we request him to present the souvenir to Mr. Sibtain Jivani. Moving on, I would like to request Honorary Treasurer of our Jamaat, Askar Basrawala Saab, to come up on stage and present the souvenir to Mr. Ali Ladhubhai. Sorry. Would like to invite Mr. Imran Rashid, IT Subcommittee Convener, to come up on stage and present the souvenir to Madam Narjis Habib. Thank you very much. आप लोग please बैठ सकते हैं because I'm going to have a photograph with Mehdi bhai क्योंकि मेरा भी gift यहाँ पे ready है. Thank you very much, everyone. We know that we are kind of ahead of our time, but I'm sure
जितना मैंने एंजॉय किया सेशन को, एंड इट वाज नेवर अ डल एनी डल मोमेंट फॉर मी, तो आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी इससे एक अच्छे तरीके से ही एंजॉय किया होगा. एंड आगे फर्दर जो है वो नेटवर्किंग सेशन की जानिब चलते हैं. बट बिफोर दैट, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर टेकिंग आउट वैल्यूएबल टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल्स, एंड आई एम श्योर कि आप लोग जो है वो इसी तरह कम्युनिटी के लिए आगे भी अपनी पार्टिसिपेशन इंश्योर करते रहेंगे. एवरीवन प्लीज़ कंटिन्यू टू रिफ्रेशमेंट्स.